मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरनी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। रब करीम जी बारगाह में दुआ घुरी निकितासीं त जग जहान ॾे ख़ैरु हुजे। हिते पहुता आहियूं त तव्हांजे लाइ बि वरी हिकु भेरो ॿीहर दिलि सां दुआ त तव्हां बिल्कुलु ख़ुशबाश हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो, करार में हूंदो। अॼु बि हिकिड़ो नओं सुबुह तव्हां असांखे नसीबु थियो आहे ऐं उमेदु आहे त महिनत कंदो। महिनत में अज़मत आहे, महिनत ई कामयाबीअ जी कुंजी आहे। कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे जो इंसानु महिनतूं कंदो आहे या को बि कमु कंदो आहे या किथे बि कंहिं बि ईअं खणी चऊं त कम में जुंबिजी वेंदो आहे, पर उनखे पोइ बि नाकामी नसीबु थींदी आहे। पोइ थींदो ईअं आहे त उहो नाकामीअ जा जेके असर आहिनि उहे उनजे अंदर में हक़ीक़त में मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं उनजो ज़िमेदार हू पाण बि कुझु हूंदो आहे, पर उहा नाकामी हू ॿियनि में तलाश करण जी कोशिशि कंदो आहे, ॿियनि में ॻोल्हा कंदो आहे उन नाकामी जी। इन जे करे वरी बि नाकाम थींदो आहे। वरी जॾहिं उहो कमु कंप्लीट थींदो आहे, वरी जॾहिं ख़तमु थींदो आहे त वरी बि जेकॾहिं नाकाम थींदो आहे त उहा नाकामी ॿियनि में तलाश करण जी कोशिशि कंदो आहे। बहरहाल जेकॾहिं सुबुह सुबुह सां असां सुठियूं ॻाल्हियूं तव्हां सां शेयर कयूं त अञा वधीक सुठी ॻाल्हि रहंदी। सुठी ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं तव्हां तालुक़ बरक़रार रखणु चाहियो था, रिश्ता बरक़रार रखणु चाहियो था त पोइ माण्हुनि जी सुठाई बयानु कंदा रहो। इहे रिश्ता तव्हांजा बरक़रार रहंदा, काॾे बि न वेंदा, तव्हां सां गॾियल हूंदा। माण्हुनि जी रुॻो सुठाई बयानु कंदा रहो ऐं जेकॾहिं तव्हां रिश्ता ख़तमु करणु चाहियो था, तालुक़ ख़तमु करणु चाहियो था त पोइ माण्हुनि जी सचाई बयानु कंदा रहो। सचाई बयानु कंदो तव्हांखां पाण ई ऑटोमेटिकली रिश्ता ख़तमु थींदा वेंदा, दोस्त तव्हांखां नाराज़ थींदा वेंदा। हाणे तव्हां ते आहे त तव्हां छा करणु चाहियो था ऐं कहिड़ो तालुक़ रखणु चाहियो था, कहिड़ो तालुक़ ख़तमु करणु चाहियो था। ॿियूं वरी ॿ टे कम जूं ॻाल्हियूं तव्हां सां ॿियूं बि शेयर कयो हूंदो हलां। उहे कम जूं ॻाल्हियूं इहे आहिनि त कॾहिं बि असां कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त दोस्तनि शेयर कंदा आहियूं इलाही ॻाल्हियूं। शेयर करणु सुठी ॻाल्हि आहे, पर के ॻाल्हियूं अहिड़ियूं बि हूंदियूं आहिनि जेके शेयर न करण जहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, उन्हनि सां तव्हांखे नुक़सानु पवंदो आहे। घणा दोस्त अक्सर पंहिंजे बारे में दोस्तनि सां ज़िक्र कंदा आहिनि, यार मूंखे पैसा कोन्हनि के, यार मां बिल्कुलु ई जेको आहे न सो हाणे कंगाल थी वियो आहियां, या मां उहो जीअं सर्वाइव कंदो उहो न कंदो आहियां। के हिकु अधु दोस्त खे तव्हां ॿुधाए सघो था, सभिनी खे इहे ॻाल्हियूं ॿुधाइण जहिड़ियूं न आहिनि। उन सां थींदो ईअं आहे त माण्हुनि जो भरोसो ख़तमु थी वेंदो आहे। माण्हू तव्हां ते एतबार करणु छॾे ॾींदा आहिनि, माण्हू तव्हां ते ट्रस्ट न कंदा, माण्हू तव्हांजी हेल्प बि न कंदा। हेल्प इन जे करे न कंदा, माण्हू ख़बर आहे कंगाल आहे, हीअ ख़तमु आहे, हिनखे जेकॾहिं 2-4 रुपया जेकॾहिं उधर बि ॾींदा थींदा कॾहिं ॾींदो असांखे। सो इहे ॻाल्हियूं अहिड़े क़िस्म जूं ॿुधाइण जहिड़ियूं न आहिनि। ॿी ॻाल्हि वरी तव्हां सां ॿुधायां त अक्सर असांजा दोस्त ॿाहिरि महफ़िल में वेंदा आहिनि, पोइ पाण में कचहरी कंदे कंदे मस्ती मज़ाक़ुनि में कॾहिं कॾहिं पोइ पंहिंजी घरवारीअ जी बि ॻाल्हि करे छॾींदा आहिनि त उहो मूंसां सुठो नथी हले, उनजो सलूक सुठो न आहे, उनजो वर्ताव सुठो न आहे, उनजो बिहेवियर सुठो न आहे। इहा ॻाल्हि बि कॾहिं बि संगत में करण जहिड़ी न आहे। ख़बर अथव छो? उनजो हिकिड़ो रीज़न तव्हांखे ॿुधायां, उनजो तव्हांखे असरु ॿुधायां। रीज़न इहो आहे त तव्हां घर जी ॻाल्हि ॿाहिरि न कयो, सुठी ॻाल्हि आहे, पंहिंजे घर जी ॻाल्हि घर ताईं रखो। ऐं हिन जो असरु इहो थींदो आहे त माण्हू तव्हांखे ॾिसी करे पोइ इहो चवंदा आहिनि, माण्हू तव्हांजे लाइ इहा सोचींदा आहिनि त जंहिं माण्हूअ जी घर में इज़त न आहे उन माण्हूअ जी भला ॿाहिरि माशरे में कहिड़ी इज़त हूंदी। पोइ तव्हांजी रेस्पेक्ट उन्हनि में बि घटिजी वेंदी। त जॾहिं घरवारी या घर में उनजी रेस्पेक्ट न आहे, उनजी इज़त न आहे, त पोइ हिन जी माशरे में कहिड़ी इज़त थी सघे थी। ॿियो के माण्हू वरी कॾहिं कॾहिं ईअं चवंदा आहिनि त मूंखे गुस्सो आहे, मूंसां न ॻाल्हाए हली। गुस्से वारी जेका अलामत आहे या गुस्से वारी जेका ॻाल्हि आहे उहा बि कंहिंखे ॿुधायो न त मां गुस्से में आहियां। माण्हू तव्हांखे ढोंगी सम्झंदा, माण्हू तव्हांखे अदाकार सम्झंदा। गुस्सो चहिरे मां वकी पवंदो आहे, गुस्सो चहिरे मां वाज़िह थींदो आहे, नज़र ईंदो आहे। सो इहा कैफ़ियत बि बयानु करण जहिड़ी न आहे हूंदी। ॿी वरी हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त माण्हू फ्यूचर प्लानिंग शेयर कंदा आहिनि माण्हुनि सां। माण्हू चवंदा आहिनि साईं मां हीउ कारोबार कयां थो, हीउ धंधो कयां थो, हिन में एतिरो इन्वेस्ट कयां थो ऐं हीउ कारोबार हेतिरो वसी थी वेंदो, हीअं जेको आहे सो हिन जी पखेड़ थींदी ऐं आउं हिकिड़े ॾींहुं वरी हीअं मालामाल बि थी सघां थो, या हीउ कमु करे पोइ आउं का मंज़िल माणे सघां थो। फ्यूचर प्लानिंग्स बि शेयर न कंदा कयो। माण्हू वॾा सियाणा अथव, माण्हू वॾा चालाक आहिनि। तव्हां अञा सोचींदा ई रहंदो, माण्हू वरी उहो करे बि छॾींदा। तव्हां अचानक ॿाहिरि निकिरंदो, यार हे त मां सोचियो हुयो, वरी ॿियो कीअं करे वियो। फ्यूचर प्लानिंग्स बि शेयर न कंदा कयो। सुठी ॻाल्हि इहा आहे, पंहिंजे दिलि में रखंदा कयो। अचानक सां सरप्राइज़ ॾींदा कयो त यार माण्हू चवनि वाह वाह हे किथे पहुची वियो, छा थी वियो। ॿियो पंहिंजे दान जे बारे में, पंहिंजी दौलत जे बारे में माण्हुनि खे न ॿुधाईंदा कयो। के माण्हू ईअं ॿुधाईंदा आहिनि, भई मां हीअ बि गाॾी आहे, उहा बि गाॾी आहे, हीउ बंगलो आहे, हीउ बैंक बैलेंस आहे, फलाणी बैंक में हेतिरा पिया आहिनि, फलाणी जॻह ते हेतिरा पिया आहिनि, मासीअ वटि हेतिरा पिया आहिनि, चाची वटि हेतिरा पिया आहिनि। सो पोइ छा थींदो आहे, पोइ थींदो ईअं आहे त माण्हू घुरण वारा घणा थी वेंदा आहिनि। तव्हां ॾे ईंदा माण्हू, चवंदा यार मूंखे हेल्प खपे, मूंखे तव्हां कुझु ॾियो। के माण्हू वाक़ई हेल्प जहिड़ा हूंदा आहिनि, मदद जहिड़ा हूंदा आहिनि, पर के हरूभरू बि किन खे वरी इहा घुरण जी आदत बि हूंदी आहे। सो मिट माइट दोस्त यार संगती साथी तव्हांखे घुरण ईंदा, कंहिंखे इनकार कंदो, कंहिंखां तव्हां लिकाईंदो या कंहिंखे पोइ मना करे सघंदो। सो इहे ॻाल्हियूं जेकी आहिनि सिर्फ़ु पाण ताईं महदूद रखंदा कयो। इहे ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं अथव, अॻिते हली फ्यूचर में तव्हांखे तमामु घणियूं कमु ईंदियूं। ॿी हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि तव्हां सां शेयर कंदो हलां, उहा इहा आहे
त हीउ जेको कोरोना वायरस जो मर्ज़ हले थो पियो या हीअ जेका वबा आहे लॉकडाउन जी सूरत हाल आहे इन में असांजा खोड़ मज़दूर तमामु घणा ॾुखियाईअ जो शिकार थिया आहिनि मर्द मज़दूरनि जी पाण ॻाल्हि कंदा आहियूं पंहिंजी ॻाल्हि कंदा आहियूं रोज़ु टीवीअ ते अची करे इन बारे में तमामु घणी गुफ़्तगू बि कंदा आहियूं पर असां इहो कॾहिं न सोचियो त असांजूं जेकी महिनतकश औरतूं आहिनि ख़ासि तौर ते जेकी ॻोठनि जूं आहिनि ॿहिराड़ी जूं आहिनि या हिते जेकी जॉब कनि थियूं वॾनि वॾनि शहरनि में उहे बि इन लॉकडाउन जो शिकार थी करे इन वायरस वारी सूरत हाल में इलाही पोइ ते पइजी वियूं आहिनि माना ईअं खणी चऊं त उहे सर्वाइव ॾाढो ॾुखियो थियूं कनि महिनतकश औरतुनि जो असांखे साथ ॾियणो आहे इहो स्लोगन आहे औरत फाउंडेशन जो ऐं औरत फाउंडेशन वारो चवणु आहे महिनतकश औरत अॼु कोरोना जे करे माशी तौर ते सभ खां वधीक मुतासिर आहे अचो त उन्हनि जी मदद कयूं हाणे मदद उन्हनि जी हेल्प इन सिलसिले में तव्हांखे करणी आहे त तव्हांखे ख़बर आहे त कहिड़ी असांजी अदी कहिड़ी असांजी भेण ऐं कहिड़ी असांजी पाड़े वारी औरत इन ॻाल्हि में भड़ आहे सुघड़ आहे के शयूं ठाहे थी उहो हथ जो को हुनुरु करे थी या पंहिंजनि ॿचड़नि खे पालण जे लाइ सिलाई कढ़ाई करे थी त उन्हनि जी हेल्प पाण करे सघूं था या त उन्हनि खां उहो कमु वठी सघूं था जेको हू कमु कंदियूं आहिनि या वरी उन्हनि जी पाण ईअं बि हेल्प करे सघूं था ॿहिराड़ीअ में अक्सर मार्केटुनि में आउं ॾिसंदो आहियां या ॻोठ जॾहिं वञणु थींदो आहे पाण बि ॻोठ जा माण्हू आहियूं तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त हिकिड़ी मुंद ईंदी आहे खारकुनि जी त खारकूं कढण ऐं उन्हनि जूं खोखड़ियूं अलॻि करण वारियूं औरतूं हिकिड़ो उन्हनि जो बिज़नेस आहे उन्हनि जो कारोबारु आहे उहो अलॻि मुतासिर थींदो आहे हिन लॉकडाउन वारी सूरत हाल में मुतासिर आहे हे असांजूं भेणियूं वधियूं पिंडियूं खणी पहुचंदियूं आहिनि मार्केटुनि में खपाइण जे लाइ असां औरतुनि जी ॻाल्हि कयूं था औरत फाउंडेशन जो ई तव्हांखे मैसेज ॾियां थो त उन्हनि जो बि कोई ओही वाही नाहे जेकी बर्थ वारो कमु कंदियूं आहिनि या जेकी ईअं खणी चऊं त असांजूं मासूं जेके आहिनि घरनि में कमु कनि थियूं उहे बि ख़ासि तौर ते वॾनि माण्हुनि उन्हनि खे मोकल ॾेई छॾी आहे ख़ौफ़ आहे हिकिड़ो त मासी अलाए कंहिंसां हेॾे ॿाहिरि वञे थी त पंहिंजी फैमिली सां मिले थी अलाए कंहिं सां कचहरी करे थी वरी असांजे घर अचे थी त अलाए छा हिकिड़ी ख़ौफ़ वारी सूरत हाल आहे उन्हनि खे उन्हनि मोकल ॾेई छॾी आहे सो इन सूरत हाल में उन्हनि जी पाण कीअं हेल्प कयूं था छा उन्हनि जी पघार पाण उन्हनि खे उहा प्रॉपर ॾियूं था या नथा ॾियूं या उन्हनि जी पाण एक्स्ट्रा हेल्प करे सघूं था या करे चुका आहियूं इन ॻाल्हि ते बि गौर वीचार करणी ज़रूरत आहे औरत फाउंडेशन जो इहो पैगाम आहे ऐं जज़्बा जमहूरियत और बा अख़्तियार औरत ऐं ख़ासि तौर ते साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान ही समूरो जेको वहिंवार आहे इहो हलाइनि पिया औरत फाउंडेशन वारा औरत फाउंडेशन जो ॾाढो सुठो मैसेज आहे महिनतकश औरत अॼु कोरोना जे करे माशी तौर ते ॾाढी कमज़ोर थी वई आहे ऐं माशी तौर ते सभिनी खां घणो मुतासिर थी आहे उन्हनि जी तव्हां असांखे हेल्प करणी आहे ऐं सुबुह जो ईंदो आहियां जॾहिं हीउ पॉम्फलेट स्टैंड जॾहिं हिते पियो हूंदो आहे त मूंखे माना हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में ईंदी आहे त माण्हू ॾिसो कीअं सोचनि था मुख़्तलिफ़ शयुनि ते पाण सॼो ॾींहुं ईअं ई गुज़ारे छॾियूं था का सोच वीचार को नओं फ़िकुर को नओं जज़्बो का नई ॻाल्हि पाण साम्हूं न आणे सघिया आहियूं सो हीउ ॾाढो सुठो स्लोगन आहे त पाण खे औरतुनि जी हेल्प करणी आहे मदद करणी आहे जेकी असांजूं औरतूं माशी तौर ते ख़ासि तौर ते औरत फाउंडेशन जो हीउ पैगाम तव्हां ताईं पहुचायां थो त कमज़ोर थी चुकियूं आहिनि या उन्हनि जी को हेल्प करण वारो नाहे त उन्हनि जी हेल्प कयो तव्हां ऐं असां सभिनी ते इहो फ़र्ज़ु आहे त औरत फाउंडेशन जे हिन स्लोगन में तव्हां असां साथ ॾियूं ऐं औरत फाउंडेशन जे हिन जज़्बे जी बि साराह कयूं ऐं यकीनन असां इहो अज़म कयूं था असां इहो वचन कयूं था असां इहो दिलि में अॼु सोचूं था त असांखे हेल्प करणी आहे छो त ख़ल्क़ ख़ुदा जी ख़िदमत सां वरी ख़ुदा राज़ी थी पवंदो आहे पंहिंजे रब करीम खे रिझाइण जो हिकिड़ो सनियो आहे औरत फाउंडेशन वारनि जो ऐं जज़्बो आहे उहो हिमत आहे तव्हां में त ज़रूरु तव्हां अचिजो जज़्बे ऐं हिमत जी ॻाल्हि कयूं था जीअं चऊं था त ख़ल्क़ ख़ुदा जी जेका ख़िदमत आहे उन सां रब राज़ी थींदो आहे अॼु हिकिड़ो महान शख़्स असांखे यादि अचे थो ऐं जंहिं पूरी उमिरि पूरी लाइफ जेका आहे सा उहा माण्हुनि खे प्यारु करण में माण्हुनि खे प्यारु विरहाइण में गुज़ारे छॾी यतीम ॿारनि खे संभालण में गुज़ारे छॾी बेवाहुनि खे पंहिंजे होम्स में ओल्ड होम्स में रखी करे उन्हनि जूं दुआऊं खटियूं ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं बि ज़िलज़िलो आयो या का ॿूॾ आई या का अणवणंदड़ सूरत हाल थी त कराची में बि तव्हां ॾिसो त उन्हनि जूं एम्बुलेंसिस जी जेका सर्विस आहे उहा ॾाढी फ़ुआल आहे ऐं तमामु घणो हिकिड़ो नेकी जो जज़्बो उनजे वजह खां पोइ बि उनजो पुटु अञा ताईं उन जेको आहे ईअं खणी चऊं नेकीअ जे कम खे अॻिते पखेड़ींदो रहे थो अॻिते उहो ई प्यारु उहा ई मोहबत विरहाईंदो रहे थो पर अब्दुल सत्तार ईदी केरु सॾाए साईं अब्दुल सत्तार ईदी साहिब जी अॼु वरसी बि आहे ऐं यकीनन रब करीम उनखे कंहिं आला मक़ाम ते रखियो हूंदो छो त जेको नेकी वारो जज़्बो आहे जॾहिं माण्हू पंहिंजो पाण खे रब करीम जे अॻियां सरेंडर करे छॾे ॾिए थो ऐं हिकिड़ो माण्हू सभु कमकार दुनिया जा ऐश दुनिया जो आराम दुनिया जी लज़त दुनिया जी रंगीनी मज़ा इहे बिस्तरा इहे
तोहफ़ा इहे बंगला छॾे करे जॾहिं कंहिं ग़रीब यतीम सां गॾु वेही मानी खाए थो न, जॾहिं पट ते वेहे थो, ऐं उन वक़्तु जेका मज़े वारी कैफ़ियत आहे, करार आहे, इहो अब्दुल सत्तार ईदीअ तमामु घणो वरितो ऐं तव्हां बि वठी सघो था। अब्दुल सत्तार ईदीअ खां पोइ आउं नथो सम्झां त ॿियनि में ॿिए का जज़्बे जी खोट हूंदी, पर असांखे अञा वधीक जज़्बो धारणो आहे अब्दुल सत्तार ईदी थियणो आहे पाण खे। ऐं ईदी साहिब जी वर्सी जो ॾींहुं आहे, तमामु घणी कचहरी उन ते पाण करे सघूं पिया, पर प्रोग्राम जो हिकिड़ो फॉर्मेट बि आहे, उन तरतीब खे बि अॻिते वधायूं। ऐं ॿी कम जी ॻाल्हि तव्हांखे हिन वक़्तु ॿुधाईंदो हलां त आउं हिते जॾहिं ॻाल्हायां थो त ॻाल्हाईंदे कॾहिं कॾहिं थकिजी पवंदो आहियां, यको हिकिड़ी फ्लो में ॻाल्हाए। सो मूंखे को होस्ट जी ज़रूरत आहे, फीमेल को होस्ट जी ज़रूरत आहे, ऐं असांजे इदारे बि इहा परमिशन ॾेई छॾी आहे त फीमेल को होस्ट तव्हां रखी सघो था। फीमेल को होस्ट जे लाइ तव्हां असांजे पेजिस ते असांखे फ़ोटोज़ पंहिंजा मोकिले सघो था, या असां सां राब्तो करे सघो था, या स्क्रीन ते जेको नंबर हले थो इन ते असांजो डायरेक्टर तव्हां सां ॻाल्हाईंदो, उन सां बि राब्तो करे सघो था। पर उनजे लाइ तव्हांखे कहिड़ियूं ॻाल्हियूं लाज़मी अचणु घुरिजनि उहे तव्हांखे ॿुधाए छॾियां। हिकु तव्हांजी तालीम सुठी हुजे, ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त हालात हाज़िरात थोरो तव्हांखे ॻाल्हाइण जी सघ रखंदी हुजो, थोरी तव्हांजी गिरफ़्त हुजे, ऐं ॿियो समाजी इशूज़ ते बि ॻाल्हाए सघो। ऐं तव्हां जेकॾहिं इन्हनि समूरनि मामलनि ते हल्की फुल्की गिरफ़्त रखो था, बाक़ी हिते ईंदो त वरी मां तव्हां सां गॾु हूंदुसि। सो असांजूं अधूं भेनरूं जिन खे शौक़ु आहे, जिन खे चाह आहे, या जेकी मीडिया में अचण वारियूं आहिनि या अचणु चाहिनि थियूं, उन्हनि भेनरुनि जे लाइ, उन्हनि अधीन जे लाइ हिकिड़ो सुनहरी मौक़ो आहे त सिंध टीवी जे प्रोग्राम सलाम सिंध जे प्लेटफॉर्म ते तव्हां दुनिया ताईं पंहिंजो पैगाम ॾेई सघो थियूं, दुनिया ताईं पंहिंजो मैसेज ॾेई सघो थियूं, दुनिया ताईं पंहिंजी सलाहियत खे मंझराए सघो थियूं। सिंध टीवी जे सलाम सिंध प्रोग्राम में को होस्ट जी ज़रूरत आहे। तव्हां जेकॾहिं इन हवाले सां दिलचस्पी रखो थियूं त तव्हां असांजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु थियो, ऐं असांजे प्रोग्राम जो, असांजे सथ जो हिसो थियो। असांखे तमामु घणी ख़ुशी थी, इंतिहाई ख़ुशी थींदी जॾहिं तव्हां असांजे प्रोग्राम में ईंदियूं। ऐं इन जे लाइ तव्हां पंहिंजा फ़ोटोग्राफ्स, तव्हां पंहिंजी CV असांजे ॾिनल नंबर जेको स्क्रीन ते थोरी देरि में हलंदो बि सही आहे, थी सघे थो हिन वक़्तु तव्हां ॾिसंदा बि हुजो नंबर खे, त इन नंबर ते तव्हां राब्तो करे बाक़ाया डिटेल्स वठी सघो था। सो हिते हिकिड़ी नंढड़ी साहीअ जो वक़्तु थियो आहे, मोज़िज़ महिमान असांजे प्रोग्राम में पहुची विया आहिनि। सो उन्हनि महिमाननि सां तव्हांजो तारुफ़ बि कराईंदुसि, पर हिकिड़ी नंढड़ी साहीअ खां पोइ आउं तेसीं ताईं चांहि पी वठां। वञो केॾांहुं बि न, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। नंढड़ी साही वरितीसीं, जल्दी मोटी आयासीं तव्हांजे लाइ, तव्हांजी ख़िदमत जे लाइ, ऐं तव्हांखे तमामु घणी ॼाण ॾियण जे लाइ। अॼु मोज़िज़ महिमान असांजे प्रोग्राम जो हिसो आहिनि, ऐं ख़ासि तौर ते जीअं मां हिकिड़ो पहिरियां इंट्रे में हिकिड़ी ॻाल्हि कई त ख़ल्क़े ख़ुदा जी जेका ख़िदमत आहे उन में वॾी हिकिड़ी करार वारी कैफ़ियत रखियलु आहे। सो अॼु जेका महिमान शख़्सियत असां सां गॾु आहे, या जेकी महिमान दोस्त असां सां गॾु आहिनि, तमामु घणी ॼाण ॾींदा असांखे मुख़्तलिफ़ मामलनि ते। पहिरीं शख़्सियत जंहिंजो तारुफ़ तव्हां सां करायां, पाण आगोश ओल्ड लेडी होम जी जेका सरबराह आहिनि, उनखे भलीकार चऊं था, शगुफ्ता सबा असां सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी? ठीक हैं आप? जी, अल्लाह का बड़ा थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं ख़ासि तौर ते जेको आहे खीर वारे मामले ते बि पाण तमामु घणा उॿरा हूंदा आहियूं, ऐं ख़ासि तौर ते कॾहिं कॾहिं कैफ़ियत अहिड़ी थी वेंदी आहे त भाई एॾो महांगो थी वियो आहे खीर, यार का हालत आहे का, या को तरीक़ो आहे यार, इहा का ॻाल्हि आहे का। सो अॼु इन हवाले सां बि कचहरी कंदासीं, ऐं ख़ासि तौर ते डेयरी एंड केटल फार्म्स जे हवाले सां जेका गुफ़्तगू थींदी उहा बि ॾाढी काराइती कम वारी हूंदी। बुखारी डेयरी एंड केटल फार्म जो असांजो दोस्त हिन वक़्तु असां सां गॾु आहे, नुसरत हबीब साहिब, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सुठो आवाज़ रखंदड़ असांजो नौजवान रागी ऐं असांजे प्रोग्राम में पहिरियां बि अची चुको आहे, ऐं पहिरियां बि असां हुनजे आवाज़ मां लुत्फ़ अंदोज़ थी चुका आहियूं, पर अॼु वरी हिन प्रोग्राम खे वधीक ईअं खणी चऊं त मज़ेदार बणाईंदासीं उन्हनि जे मज़ेदार आवाज़ सां। सो भलीकार चऊं था नौजवान रागी तनवीर अली साहिब खे असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियो आहे। अस्सलाम वालेकुम। ख़ुशि आहियो न? तबियत ठीकु आहे? वॾो करार लॻो पियो आहे न? वॾी महिरबानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में आहियो। ऐं उस्ताद ख़ान साहिबु मोहरम नाज़ साहिबु असां सां गॾु आहे। मोहरम साईं भलीकार। सवेर औरत फाउंडेशन जी जेका स्टैंड पई त तव्हां नज़र न आयो हुन में, मां सोचियो शायदि न आया हो, पर तव्हां त अची विया आहियो। ॾाढो सुठो जो तव्हां ॾाढो सुठो ॿुधायो साईं, कम जी ॻाल्हि हुई। औरत फाउंडेशन जो ॾाढो सुठो मैसेज पियो। तव्हां त ठीकु आहियो न? ख़ैरियत सां, मज़े में? वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो। अच्छा जी शगुफ्ता, मुझे ये बताएं कि आगोश ओल्ड लेडी होम ये किस तरीके से काम कर रहा है और क्या होता है इस लेडी होम में? मतलब कोई नेकी का काम है, कोई अच्छाई का काम है? आगोश ओल्ड होम जो है पिछले
تقریباً 18 ایئرس سے کام کر رہا ہے. اچھا. ایسی خواتین جو بے سہارا ہیں, بے سہارا, جی, ان کو شیلٹر فراہم کیا جاتا ہے بالکل فری آف کاسٹ. ان کو ہوملی انوائرمنٹ میں ایسا ماحول دیا جاتا ہے جو کہ بالکل گھر جیسا ماحول ہوتا ہے. فل ٹائم ان کی 24 آورس کیئر کی جاتی ہے. تینوں ٹائم کا انہیں کھانا فراہم کیا جاتا ہے, اور میڈیسن, ٹریٹمنٹ, ایوری تھنگ. ایک آئیڈیل ہوم میں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اولڈ ایج میں, وہ تمام چیزیں آغوش اولڈ ہوم میں فراہم کی جاتی ہیں. صحیح صحیح. اولڈ ہوم مطلب اس میں اولڈ ایج خواتین آ سکتی ہیں یا کوئی ایج کی لمٹ نہیں ہے؟ نہیں, زیادہ تر تو ہمارے پاس خیر کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اولڈ لیڈیز پر ہی ہے. بے سہارا, بیوہ نہیں, اولڈ بھی ہونا ضروری ہے, کیونکہ ظاہر اولڈ ہوم ہے تو اولڈ ہوم میں اولڈ لیڈی ہی آئیں گی. ایسے ہوم ہے تو نیا نا, خود تو نیا ہوم ہے نا, یا ہوم بھی اولڈ ہے, وہ جو مکان ہے وہ تو ٹھیک ہے نا, اولڈ از گولڈ. بوسیدہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں, بوسیدہ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں اولڈ ایج لوگوں کے لیے تو ہمیں ایک ایسا ماحول پرووائڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ایک دکھ بھری زندگی سے اگر آئے ہیں تو یہاں پر ان کو ہر چیز میں خوبصورتی فراہم کی جائے تاکہ وہ زندگی کی طرف لوٹ کر آئیں. کیونکہ جو دکھ انہوں نے دیکھے ہیں, اگر ہم انہیں جس طرح آپ نے کہا اولڈ ہوم, پرانا بوسیدہ, تو وہ ان کی جو ہے ذہنی حالت اور جسمانی حالت ہم صحیح نہیں کر سکیں گے. اسی حال میں ہم صحیح کر سکیں گے ان کو ایک خوبصورت ماشاءاللہ ہم نے انوائرمنٹ فراہم کیا ہوا ہے. لان بہت اچھا ہم نے مینٹین کیا ہے وہاں ان کے لیے. ہم نے جہاں پر گارڈن میں وہ لوگ چائے پیتی ہیں, اور جی بیٹھ کے ان کی نماز وغیرہ پڑھنا, قرآن مجید پڑھنا, سب چیزیں مطلب ایسے خوبصورت ماحول میں تاکہ وہ وہاں پر بیٹھ کر خوش ہوں اور اچھا محسوس کریں. صحیح 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 ماشاءاللہ. اچھا نصر صاحب یہ بتائیں کہ بخاری ڈیری اینڈ کیٹل فارم لاک ڈاؤن کی صورتحال میں کیسا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے سن ٹی وی کا ٹیم کا کہ آپ نے یہاں مجھے بلایا اور موقع دیا بات کرنے کے لیے. جی 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 جی. تو ماشاءاللہ بخاری ڈیری ہمارا بہت پرانا فارم ہے, پپری میں ہے, اور 35-40 سال کا پرانا فارم ہے. اچھا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ تو ہمارے پاس کوئی مطلب یہ بچپن میں شروع کیا تھا کہ آپ نے 35-40 سال پرانا ہے؟ چیئرمین صاحب ہیں, گروپ آف چیئرمین رفیق خان. اچھا اچھا, وہ الگ ہیں. انہوں نے شروع کیا اور اس کے بعد میں انہوں نے اس کو لے کے چلے, خود اس کو انہوں نے لک آفٹر کیا اور ڈیلی فارم جانا اور چیک کرنا. کوئی تعداد میں ہمارے پاس بھینس ہے اور گائے ہے, اس کے دودھ بھی نکلتے ہیں, اس کے بچے بھی ہوتے ہیں, اس کو ہم ریسائیکل بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں اب اس فارم کے اوپر ہم نے کوئی تقریباً 200-250 بندوں کی روٹی روزی لگائی بھی ہے. ان کی رہائش بھی ہے, کھانا بھی ہے, ان کا میڈیکل بھی ہے, تمام چیزیں اس کو ہم لوگ خود ہمارے چیئرمین صاحب رفیق خان صاحب دیکھتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائیں سائیں کیر پہ ڳالهايو मुंहिंजा भाउ? سائیں محمد اسلم سومرو شکارپور کان. سائیں कीअं आहियो साईं? ठीकु आहियो? اللہ کا لکھ احسان ہے, شکر ہے اللہ جو. تव्हां ॿुधायो साईं? बिल्कुलु ठीकु ठाक. मौसम कीअं आहे हिन पासे भला? गर्मी आहे, मींहुं उगी आहे, छांव आहे, छा आहे? झुड़ लॻो पियो आहे, झुड़ लॻो पियो आहे. झुड़ लॻो पियो आहे न साईं? जी जी जी. इहे ककर वसनि कोन था, रुॻो असांखे माना यासरा था ॾियनि. जी जी साईं. अच्छा प्रोग्राम ॾिसो पिया, छा चवणु चाहींदो? प्रोग्राम तव्हांजो सुठो आहे साईं, असां रोज़ ॾिसंदा आहियूं. वाह वाह, वॾी महिरबानी, लख थोरा. तव्हांजा रोज़ ॾिसंदा आहियो, प्रोग्राम तव्हांखे वणे थो. अॼु छा चवणु चाहींदो प्रोग्राम जे हवाले सां? प्रोग्राम सही आहे साईं. प्रोग्राम सही आहे. कुझु ॿुधाईंदो, कुझु गीत झुंगारींदो, कुझु शेर ॿुधाईंदो? तव्हांजी कंप्लेन ॾाढी वणंदी आहे साईं. बड़ी मेहरबानी भाउ, लख थोरा. थैंक यू सो मच सर. आप बात कर रहे थे जी. تو ہمارا فارم کنٹینیو آلریڈی چل رہا ہے. اچھا. اور لاک ڈاؤن میں تو کافی پرابلم آئی ہے کہ ملک چوائی کے بعد مارکیٹ لے جانا, لانا, ٹرافک, گاڑی, بیچ میں لاک ڈاؤن کے مسئلے, اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی کیونکہ ہمارے پاس جو ڈیری فارمز تو بند نہیں ہوئے لاک ڈاؤن میں, میرے خیال سے ڈیری فارمز تو کھلے تھے. نہیں کھلے رہتے ہیں, دودھ وغیرہ تو مل رہا تھا, دودھ چوائی وغیرہ ہو رہے تھے اور لے جا رہے تھے, لا رہے تھے. بس راستے میں پرابلم آ رہا تھا کہ کوئی راستہ بند ہے, کوئی کھلا ہوا ہے. اس کو بھی ہم نے فیس کیا کہ کن کو چوائی کے بعد شارٹ ٹائم پہ ہمیں دودھ منڈی یا دکانوں پہ پہنچانا پڑتا ہے, کیونکہ جلد بازی میں نہ کریں تو دودھ بیچ میں خراب ہو جاتا ہے. صحیح. اور یہ فارم کے اوپر ہمارے ماشاءاللہ بہت بہتر کام ہے,
लॉक डाउन के ऊपर से प्रॉब्लम तो आया है, हमें नहीं हर को आया है, हर लोग परेशान है, किसी की इनकम बंद हो गए, किसी की सैलरी कम हो गई, मगर हमारे यहाँ रहाइश खाना पीना बंदों को देके और अपनी फार्म को हम मेंटेनेंस कर रहे हैं और उसको वाइबल चला रहे हैं माशाल्लाह। अभी हमने बुखारी डेयरी कंपोस्ट के नाम से एक खाद भी लॉन्च किया, अच्छा जो कि हमने बायोगैस के प्लांट लगाया। अच्छा, खाद जो बायो कंपोस्ट फर्टिलाइजर है, अच्छा अच्छा, जो कि हमने अभी लॉन्च किया है, 2 साल हो रहे हैं, पूरे अंदरूनी सिंध में दे रहे हैं, कट्टा में, गारों में, साकरों में, दैम में, चोर जमाली में, वो हमने बायोगैस का प्लांट लगाया, जिससे हम बिजली पानी अपनी चुआई मशीन चलाने के बाद जो हमारे कंपोस्ट के सिलेरी निकलते हैं उससे हम इसको बनाते हैं। अच्छा, बायो कंपोस्ट फर्टिलाइजर, अच्छा, उसको फिर प्लांट में डाल के रिसाइकिल करके सही और मार्केट में लोगों को भी दे रहे हैं, ज़मीनों पर भी दे रहे हैं। बहुत से किसान हैं कि वो उनको ज़मीन में टमाटर लगाना, सब्जी लगाना, चुकंदर लगाना, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, तो हमने लोगों को प्रोवाइड भी किया, सही फ्री में भी दिया। अच्छा, पहले आप अपने जमीन पे लगाएं, अब भी फ्री में दे रहे हैं, दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल यार, ये बात अच्छी है। हाँ, इसलिए दे रहे हैं कि उनको जब पसंद आए, उनको चीजें समझ में आए, सिंपल के तौर पे पहले दे रहे हैं। पहले कहते हैं पहले आप 1 एकड़ पे लगा लें, आपको इस चीज से फायदा पहुंचता है, फिर मुझे कॉल करके लें, वरना नहीं लें। कहते नहीं कंपोस्ट फर्टिलाइजर तो बहुत अच्छी चीज है। पहले तो लोग आम गोबरी इस्तेमाल करते थे, KMC गोबरी, कच्चा गोबरी, जिससे पौधे फूल तमाम चीजें जल जाते थे। मगर ये चीज जब हमने लॉन्च किया बायोगैस के प्लांट से, लोग तो ऐसे ही गोबर भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लोग तो सादा गोबर करते थे, उनको समझ नहीं आता था। सही जब से हमने ये प्लान लगाया और हमारी डेयरी काफी पुरानी थी, उससे हमें 2 फायदे की, बिजली भी इस्तेमाल हो रहा है, बायोगैस से प्लान भी चल रहा है, उसके बाद इसके सिलेरी से हम ये कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनाते हैं। अच्छा, इससे हमें तकरीबन लोगों को बहुत सब्जी में, फलों में और फूलों में, घर के बंगलों में बड़े फायदे पहुंचे। सेहत के लिए मुज़र तो नहीं है, सेहत के लिए जो सब्जी नहीं उगल के आएगी। हाँ, इससे अगर वो सब्जी खाते हैं, जिस तरह चुकंदर, भिंडी, लौकी, मैंने अपनी जमीनों पे लगाया। अच्छा, हमारा पिपरी में है, गारों में है, सही, गुलामुल्ला, पहले हम उस पे लगा के फिजिकल चेक किया। सही, ये फिजिकल चेक किया, इस बात को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, केर पिया ॻाल्हायो? ज़ुल्फ़कार अबरो पियो ॻाल्हायां, न्यू सिटी हैदराबाद खां। साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो? बा ख़ैरियत सां, मज़े में? अल्लाह जो शुक्र आहे, करम नवाज़ी आहे। तव्हां ॿुधायो, तमामु ठीक कीअं आहियो? ज़बरदस्त बरसाति पई आहे भला हैदराबाद में? कल्ह 3 ॾींहं अॼु का सूरत हाल, का अपडेट? पर बूंदाबांदी थी आहे, बसि ॿियो कुझु कोन्हे। वाह, हलो साईं, बूंदाबांदी खां पोइ वरी ॿी किस्त में बरसाति बि पवंदी? हा भई, थी सघे थो अॼु पए, बाक़ी फ़िलहाल त कोन्हे। सही। अॼु प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो, छा ॿुधाईंदो, कुझु फरमाईंदो? छाजो साईं? शेर ॿुधाईंदो? जी ॿुधायो साईं, वाह कयो। छा जो आहे साईं? जिथे अमां छॾियूं उते ई आहीं, अखियूं अब्दुल लतीफ़ चवे माग न मटाई, बेहतर वाजाई त कॾहिं कांगन खेॾां। वाह, कॾहिं कांगन खेॾां। वाह साईं, वॾी महिरबानी, लख थोरा। असांजा मोज़िज़ ॿाहिर ईअं ई कॉल करे सघनि था, ऐं ख़ासि तौर ते असांजूं वधियूं जेकॾहिं TV ते अचण जूं ख़्वाहिशमंद आहिनि ऐं प्रोग्राम करणु चाहिनि थियूं, ऐं वालिदेन जेकॾहिं पंहिंजी कंहिं नियाणीअ खे इजाज़त ॾियणु चाहिनि था, त पोइ असांजे इन ई नंबर ते तव्हां टेलीफोन करे असांजे डायरेक्टर सां ॻाल्हाए सघो था। नंढड़ी साई वठूं था, हिते मोटी अचूं था, अञा कचहरी पंहिंजी रहे थी। तनवीर अली खां कलाम बि ॿुधंदासीं, काॾे न वञो, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदीद। ऐं वरी तव्हांखे ॿुधायूं त जेकॾहिं का भेण, का धीउ असांजी जंहिंखे TV ते अचण जो शौक़ु आहे, या पंहिंजूं सलाहियतूं मञाइण जो शौक़ु आहे, ऐं सम्झे थी त आउं टैलेंटेड आहियां, त पोइ मूं सां गॾु को होस्ट थी सघे थी, असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघे थी। ऐं ॾाढो सुठो प्लेटफॉर्म आहे, फैमिली माहौल आहे सिंध TV जो। हीउ जेको नंबर स्क्रीन ते तव्हांखे नज़र अचे थो, इन ते तव्हां राब्तो करे असांजे डायरेक्टर सां ॻाल्हाए सघो था, ऐं राब्तो करे तव्हां पंहिंजूं सलाहियतूं ॿुधाए सघो था, स्किल्स पंहिंजूं ॿुधाए सघो था, तव्हां छा करे सघो था या करे सघो थियूं। सो अॼु असांजा महिमान असां सां गॾु आहिनि नुसरत हबीब साहिब ऐं शुगुफ्ता सबा, ऐं तनवीर अली बि असां सां गॾु आहे। त हिन लम्हे आउं चाहियां थो त हिकिड़ो ख़ूबसूरत कलाम तनवीर साईं खां ॿुधूं। मोहरम साईं, तव्हांजो छा ख़्यालु आहे? ईअं न, हिकु अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं पहले। जी, वाह कजो साईं तनवीर साईं।
रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां तूं ई रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां तूं ई रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां तोखे कीअं परचायां तोखे कीअं परचायां तोरे मेड़ू थो मुंजरायां तोरे मेड़ू थो मुंजरायां तूं ई रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां तूं ई रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां खुशियों में दौलत मामा झूमट ते झुमरियूं हणी नात खुशियों में दौलत मामा झूमट ते झुमरियूं हणी तूं चेची महबूब अंगण ते तूं चेची महबूब अंगण ते झूम नचा मां गाया तूं ही रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां तोखे कीअं परचायां तोखे कीअं परचायां तोरे मेड़ू थो मुंजरायां तोरे मेड़ू थो मुंजरायां तूं ई रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां तूं ई रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां बधा थो पेर पवा थो मिंथू खोड़ कयां थो पवा थो मिंथू खोड़ कयां थो मूं ते कर का नज़र करम जी मूं ते कर का नज़र करम जीअं कारो वॻो मालाया तूं ई रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां तूं ई रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां तोखे कीअं परचायां तोखे कीअं परचायां तोरे मेड़ू थो मुंजरायां तोरे मेड़ू थो मुंजरायां तूं ई रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां तूं ई रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां हज़ारे मुंह में आहिन तुझे आॾो छाया ऐब हज़ारे मुंह में आहिन तुझे आॾो छाया सच थो चवां मां ख़ालिद तोसां सच थो चवां मां ख़ालिद तोसां पाण खे कीअं भेटायां तूं ई रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां तूं ई रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां तोखे कीअं परचायां तोखे कीअं परचायां तोरे मेड़ू थो मुंजरायां तोरे मेड़ू थो मुंजरायां तूं ई रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां तूं ई रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां तूं ई रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां हा साईं वाह तनीर साहब वाह 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 तूं ई रस महबूब मिठा मां तोखे कीअं परचायां वाह 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 अरे परचायां कीअं वरी उहो महबूब ॿुधाए त मूंखे ईअं परचाए ईअं हो न साईं पाण राज़ी थिए साईं वाह 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 ॾाढो मज़ो आयो बहरहाल सो असां सां जेके मोज़िज़ महिमान आहिनि उन सां कचहरी कयूं था अच्छा शगुफ्ता जी मुझे ये बताएं कि इस ओल्ड होम में कितनी बेसहारा औरतें हैं आपके पास 35 हैं 35 माशाल्लाह अच्छा तो क्या उनके पेरेंट्स वगैरह आते हैं उनसे मिलने या बिल्कुल ही कट ऑफ हैं वो अपने रिश्तेदारों से? नहीं देखिए मेरे पास तो जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादातर वो हैं जो बेसहारा हैं जिनका दुनिया में अल्लाह के बाद कोई है ही नहीं। अच्छा यानी ओल्ड एज है 85 ईयर्स ओल्ड हैं 90 ईयर्स ओल्ड हैं
تو ظاہر ہے ان کے پیرنٹس تو آنیسٹلی نہیں ہوں گے, اور شادی نہیں ہو سکی, اولڈ ایج ہو گئی, تو وہ پھر معذوری کا شکار ہو گئیں, تو آس پڑوس والے ان کو اولڈ ہوم میں ہمارے چھوڑ گئے. یا پھر ایسی خواتین ہیں جن کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر ان کے بچے ہوئے ہی نہیں, بے اولاد ہیں وہ, تو وہ اولڈ ایج ہو جانے کی وجہ سے رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا یا چھوڑ دیا یا کچھ ایسا. آج کل تو دیکھیں اولاد بھی منہ موڑ لیتی ہے, رشتہ دار تو پھر بہت دور کی بات ہے نا. آج کل ہمارے معاشرے میں بہت معذرت کے ساتھ بہت زیادہ خود غرضی ہو گئی ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, ہر کوئی اپنے لیے جی رہا ہے بس, بالکل. کیونکہ دیکھیں خاص طور پہ بزرگ جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. پہلے تو ایک مطلب اچھا مطلب سر پہ سایہ سمجھتے تھے بزرگوں کو, بالکل بالکل, لیکن آج کل وہ ہے کہ بھائی بوجھ سمجھا جاتا ہے. ہے. بالکل. تو ہمیں چاہیے کہ ان کا احترام کریں, ان کو رسپیکٹ دیں, اور ان کے جو مفید مشورے ہیں, ظاہر ہے کہ ایک ان کا ایکسپیرینس ہے, ہمیں ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں, نہ کہ ان کو ایک کنارے لگا دیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ظاہر سی بات ہے مسلمانوں میں تو یہ بات ہونی ہی نہیں چاہیے. اولڈ ہوم ہمارے ملک میں تو اصولاً ہونا ہی نہیں چاہیے. بہت ہی غلط چیز ہے, کیونکہ ہم لوگ اپنے والدین, کیونکہ ہمارے اللہ نے جو ہے سب سے بڑا مقام ماں کا اور باپ کا درجہ دیا ہے, تو اگر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو یہ ہمارے معاشرے میں ایک نظام کس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں, بیویوں کے کہنے پہ, بھائیوں کے کہنے پہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دینا یار, ایک بڑا ہوم میں رکھ دیتے ہیں, ادھر رکھ دیتے ہیں, ان کا خیال نہیں کرتے ہیں, جو کل کو وہ بھی بوڑھے ہونے. بالکل انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ظاہر ہے آج جو ہم کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ جو بو رہے ہیں وہ انہوں نے کاٹنا ہے. اگر وہ چاول کی فصل بوئیں گے تو گندم تو نہیں کاٹ سکتے, ایسی بات ہے. جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے, کل ان پہ بڑھاپا آئے گا, ان کے بچے بھی ان کے ساتھ یہی کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سمجھ رہی ہوں کہ اس کے بہت سارے ریزن ہیں, لیکن ایک ریزن برداشت کا نہ ہونا بھی ہے, کیونکہ ہم بزرگوں کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے جب اولڈ ایج ہو جاتا ہے تو اس کے اندر نفسیاتی پرابلم بھی آ جاتی ہیں, ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرنا, بار بار ایک بات کے پیچھے پڑ جانا. یہ نہیں سوچا جا رہا کہ بچپن میں ہم بھی ریپیٹ کیا کرتے تھے, وہ سنتے تھے. اگر کوا بیٹھا ہے تو 10 دفعہ بچہ پوچھتا ہے ماں سے یہ کیا چیز ہے, بات 10 دفعہ نہیں 20 دفعہ بتاتی ہے کہ یہ بیٹا کوا ہے, یہ چڑیا ہے. لیکن اگر ماں 1 سے 2 دفعہ پوچھ لے تو کیا ہے ابھی تو بتایا تھا, بار بار آپ کو بتا رہے ہیں, پاگل ہو گئی, آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بزرگ جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے جس گھر میں بزرگ ہوتے ہیں وہ رحمتوں سے بھرا ہوا گھر ہوتا ہے, اور بزرگوں کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں. اور ہم لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو, ہمارے لیے لوگ مزارات پہ جا کے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں, جبکہ ان کی جنت ان کے گھر میں موجود ہوتی ہے. اگر وہ ان سے دعائیں کروائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ لمحہ نہیں لگے اس دعا کو قبول ہونے میں, کیونکہ ماں کی دعا تو ڈائریکٹ فرش سے عرش پہ جاتی ہے, کیونکہ وہ دل سے کر رہی ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے. یہ ایک ریزن ساس اور بہو کا تنازع تو نہیں ہے, یہ بھی مجھے بتا دیں, کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ بیٹا شادی کرتا ہے, بہو آ جاتی ہے, تو پھر ماں کی جو ہے نا وہ تھوڑی ویلیو کم ہو جاتی ہے, ماں کی جانب اس کی نگاہ ہی نہیں پڑتی. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر بیٹا اپنی ماں کی رسپیکٹ کرے گا تو بہو بھی کرے گی, یا تو اپنی جو ہے بیوی کو سمجھا دے کہ بھائی سب کچھ یہ ہے, اگر اس کو کچھ ہوا تو پھر آپ بھی نہیں رہیں گے یہاں, یا تو یہ ایک جملہ بول دے شادی کے دن ہی, تو میرے خیال سے یہ سلسلہ حل ہو سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جب دیکھیں بزرگوں کا گھر میں ایک مقام ہوگا نا, ایک ویلیو ہوگی, تو پھر ظاہر سی بات ہے آنے والے بھی ان کو اسی طرح سے رسپیکٹ دے گی. اگر بیٹا ہی رسپیکٹ نہیں دے گا تو بہو کیسے رسپیکٹ دے گی. اور دوسری یہ کہ ایک ہمارے بچوں کی تربیت کا بھی تھوڑا سا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے. آج کل تو ٹائم ہی نہیں ہے نا, بچوں کی تربیت ملتے ہی نہیں ہے, والدین بچوں سے پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو. بالکل ہماری نانیاں اور دادیاں ہماری تربیت کر رہی ہوتی تھی کہ بچی نے پرائے گھر جانا ہے تو آپ اس طرح نہیں بیٹھیں, اس طرح نہیں بیٹھیں, اس طرح زور سے نہیں چلیں, پرائے گھر جانا ہے, کام سکھائیں. آج کل تو لڑکیاں نیٹ پہ بیٹھی ہوتی ہیں, ماں بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب تربیت ہی نہیں ہوگی تو جب ظاہر سی بات ہے جب دوسرے گھر جائیں گی تو وہ تربیت ہی نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے سکھایا جاتا ہے نا, تو بچیوں کو شروع سے
صحیح صحیح کہ ساس بھی آپ کی ماں ہے, سسر بھی آپ کے باپ ہیں, اور وہی اصل آپ کا گھر ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب لڑکی رخصت ہو کے چلی جاتی ہے اصل گھر تو اس کا سسرال ہی ہوتا ہے نا. بالکل اس کو بتا دیا جائے پہلے سے ہی, آداب سکھائے جائیں. بالکل بالکل بہت اہم ہے. میں سمجھتی ہوں آج کل ماؤں نے اپنی بچیوں کی تربیت بالکل صحیح زاویے میں نہیں کر رہی ہیں. ان کو بالکل یہ نہیں بتایا جا رہا ہے. آج کل ماں خود نیٹ پر لگی ہوئی ہے, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, تو یہ موبائل اور نیٹ اور اس یہ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے نا, انٹرنیٹ, جس کو دیکھو اس کے اوپر ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, مگر وہ اپنی موبائل پہ لگی ہوئی, ایک ریپلائی دیتے تھے پھر کھانا کھا بس اب آ رہے ہیں جب تک وہ موبائل چلا رہی ہیں. والدین نے 2-3 دفعہ کہا آ جاؤ بیٹے کھانا لگ گیا, مگر وہ نہیں, وہ موبائل پہ ہی لگی ہوئی ہیں. اب اس دوران والدین بھی کیا کریں, وہ بیچارے بھی پریشان ہیں. وہ میں نے ایک میسج آیا تھا کسی ماں نے بیٹے کو کہا بیٹا مجھے ایک موبائل لے دیں. ایک کمرشل چلا تھا, بہت ہی اچھا تھا, کبھی کبھار کمرشل بہت اچھے بنتے ہیں. تو بیٹے نے کہا کہ کیوں, آپ موبائل کیا کریں گے؟ تو ماں نے کہا آپ ہمیشہ موبائل پہ مطلب بات کرتے ہیں, چیٹ کرتے ہیں, میں بھی آپ سے موبائل پہ چیٹ کروں. تو یہ آج کل کا یہ بالکل آج کل کا ماحول بالکل ایسا ہی ہے. اور موبائل ماشاءاللہ ایک سے ایک آ رہے ہیں, ایک سے ایک چینج ہو کے آ رہے ہیں. اگر کسی نے انہوں نے 1 لاکھ کا لیا تو اگلے نے 1.25 لاکھ کا لو, 2 لاکھ, یہ بھی بیچ میں کمپٹیشن ہے. چلیں جی 1.25 لاکھ اور 1 لاکھ کی بات ہے. بھینسیں آج کل کتنے لاکھ کی مل رہی ہیں یہ بتائیں؟ 2-4 بھینسیں لینی ہیں بھینسیں اگر آپ نے لینی ہے تو چوائی والی بھینسیں لیں گے تو وہ آپ کو ذرا 2,60,000 2,70,000. مگر ابھی جو چیزیں لینے والی ہے وہ تو قربانی کی ہے کہ ابھی تو لوگ جانور بچڑا بچڑی لے رہے ہیں. اور ہم نے بھی انشاءاللہ بخاری ڈیری فارم نے بھی فارم پر بھی شیل لگایا ہوا قربانی کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ 15 سے محفش منڈی میں بھی لگائیں گے. قربانی پہ بات کرتے ہیں, کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو سائیں کیر پا گلائیو؟ سائیں سکندر سولنگی گلائیں تو کوئٹہ کو. سائیں سکندر صاحب خوش آئے ہو, طبیعت ٹھیک با؟ اللہ جا احسان رکھو بتاयो. جی سائیں پروگرام ॾिसो पिया. बस साईं थोरो महांगे जे मथां बि ॻाल्हायूं, ग़रीब आदमी मरी वियासीं. थोरो वॉल्यूम जेको आहे सो नई में थोरो वधाइजोसि प्लीज़. जी साईं. जी 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 साईं जी जी छा पिया चओ, तव्हांजो आवाज़ थोरो ॿुधण में घटि साईं अर्ज़ु कयां थो वरी महांगे जे बारे में कुझु ॻाल्हायो, ग़रीब आदमी मरी वियासीं. साईं मां मादर सां सम्झी न सघियुसि, अलाए छा चओ? मां चयो साईं महांगाई वधी वई आहे, कुझु इन जे बारे में बि डिस्कस कयो. हा साईं महांगाई वधी वई आहे, इहो साईं सूर आहे, वॾो दर्द आहे इहो. बसि असांखे ॻाल्हि न पुछा कयो, बसि इहा महांगाई मारे छॾियो आहे. मां हाणे सोचां थो हाणे छा कजे, हिन हवाले सां ॻाल्हायूं था. कचो थैंक यू थैंक यू महांगाई मारे छॾियो था, महांगाई मारे छॾियो. महंगाई का रोना तो हर कोई रो रहा है. महंगाई तो बिल्कुल बहुत ज्यादा ही है. जो चीज मतलब 10 रुपए की थी वो तो 20 की भी नहीं हो गई, 100 की है, 100 की हो गई भाई जल्दी में फटाफट. देखा था ना लॉकडाउन में, ये मुंह में मास्क लगाने का क्या हाल हुआ था. हाँ सही बात है. कोई 1000 का ले रहा, कोई 2, अब देखें कहाँ पे आ गए. तो असल में महंगाई तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो दरमियाना हो. सही बात, सब रो रहे हैं. चले जी महंगाई की सूरत हाल में कुर्बानी की क्या पोजीशन है? कुर्बानी की पोजीशन ये है कि कुर्बानी तो करना है. कोई ले सकता है गाय बछड़ा वगैरह ले सकता है. अब लोग बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मैं हिस्से पे ले लूं 15,000 में 18,000 में. और तकरीबन कराची में तो आपको पता है अक्सरियत ज़्यादा है, लोग कुर्बानी करते हैं, शौक भी बहुत ज़्यादा करते हैं. सही जानवर को भगाना और घुमाना करना. और उसके साथ साथ इनको लॉकडाउन, ये बहुत ही तफसीली गुफ्तगू वाली बात हो गई. ये मैं आपसे पूछूंगा ब्रेक के बाद, अगर आप इजाज़त दें तो. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. नंढड़ी साई वठूं था, वञो केॾांहुं बि न, कुर्बानीअ जी ईद बि अचण वारी आहे. सो तव्हां छा सोचियो आहे, तव्हांजी छा प्लैनिंग आहे? ऐं घर में औरतुनि जो इन मामले में वॾो दाबो हलंदो आहे त मूंखे ही खपे, माना बकरो खपे, मूंखे ॾांद हुजे. ऐं के त वरी जेको आहे सो चवंदा आहिनि दोस्त त बाबा असां उठ जी कुर्बानी कंदासीं. उस्ताद मुहर में असां सोचे छॾियो आहे हिसो उठ में आहे असांजो. सो वञो केॾांहुं बि न, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध. मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध. सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चवंदे रोज़ानी जीजर अख़बार जो मुतालियो कयूं था. ऐं अॼु अरबा जो ॾींहुं आहे 8 जुलाई 2020 मुताबिक़ 16 ज़ुल्क़द अॼु. ऐं अॼोकी अख़बार में जेकी ख़बरूं आहिनि उहे इहे आहिनि त सखर में कोरोना कहर करे छॾिया. 24 कलाकनि में 153 केस ज़ाहिर. ऐं हैदराबाद में बि कोरोना वायरस वॻे वधीक 2 ॼणा फोत थी विया आहिनि. ऐं जेकी ॿियूं ख़बरूं आहिनि अहम उहे बि तव्हां ताईं पहुचायूं.
त सिंध हुकूमत उज़ैर बलोच बाबति असुल रिपोर्ट जारी नाहे कई। चीफ जस्टिस पाण मुरादो नोटिस वठे वफ़ाक़ी सरकार इहो मुतालबो कयो आहे ऐं वफ़ाक़ी काबीना पारां पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में इज़ाफ़ो जाइज़ करार। मां वरी हर पढ़ां थो, मां चयो नाजाइज़ करार अलाह करे लिखियलु हुजे, पर ईअं नाहे, जाइज़ करार थी वियो आहे। ऐं साईं ॿियूं ख़बरूं जेकी आहिनि उहे ई आहिनि त नथो सम्झां त इमरान ख़ान जी को ॿियो जाइ वठंदो, शाहिद खाकान चवे थो। ऐं हिन पासे ॿियूं ख़बरूं आहिनि त कंदकोट लॻो पाणीअ जे वारे तां छेड़ो, हिक ई घर जा 3 भाती क़तल। नंढी नंढी मामूली ॻाल्हि तां पाण में जेकॾहिं असां विढ़ूं था, अफ़सोस जोॻो इहो अमल आहे। ऐं मोहरम साईं कॾहिं कॾहिं आउं ॾिसंदो आहियां त नंढड़े चूज़े ते कुकड़नि ते जहिड़ो थी पवंदो आहे। ईअं न साईं, बाबा मुंहिंजो कुकुड़, बाबा तूं छो खणी वई, या तोॾे छो आयो, तो लिकायो छो, उन ते साईं माण्हू अमरा कटी। त इन्हनि नंढनि नंढनि मामलनि ते एॾा वॾा जेके आहिनि से असां जेके आहिनि फ़ैसिला करे ऐं इंसानी जाननि जो ज़ियान कयूं था, इहो न थियणु घुरिजे। ऐं हिन अल्ताफ़ हथु मिलाइण खां माज़रत करे छॾी, कोरोना वायरस जे करे हथु नथा मिलाइनि इलाही माण्हू, साईं तव्हां बि एहतियात कंदा कयो। महकोट में माई भाॻीअ जी 34वीं वरसी मल्हाई वई ऐं शाहिदा मुनी चवे थी त अदाकारी खां वधीक गुलूकारी ॾुखियो फ़न आहे। इहो हाणे तनवीर अली साहिबु ॿुधाईंदो। साईं तनवीर साईं, ॾुखियो फ़न आहे न गुलूकारी अदाकारी खां वधीक? सवलो लॻंदो आहे, हा, पर जॾहिं हिन समुंड में लहिजे थो हा त समुंड में सम्झो कतिरो बि जेको आहे न नसीब कोन थो थिए। सही सही। हाणे जीजल अख़बार रखां थो तव्हांजी गुफ़्तगू सां गॾु हिकिड़ो मिठड़ो को कलाम ॿुधायो असांखे, बिस्मिल्लाह, उन खां पोइ अॻिते वधूं था। तो जवां जमालो, लुची लुची तो जवां जमालो, जली जली तो गया उजालो, लुची लुची तो जवां जमालो, लुची लुची तो जवां जमालो, खिली पुछी तो तकिए हला तो, खिली पुछी तो तकिए हला तो, जिया हले तो जहान जानी, जिया हले तो जहान, रुनो घणो तम अजीम आही कमाल वांगे, हसीन सोहणे ख्याल वांगे, हसीन सोहणे ख्याल वांगे, अजीम आही कमाल वांगे, हसीन सोहणे ख्याल वांगे, हसीन सोहणे ख्याल वांगे, तॾहिं त तुंहिंजो जमाल जलवो, तॾहिं त तुंहिंजो जमाल जलवो, जॾहिं कॾहिं आ जवानो जानी, जॾहिं कॾहिं आ जवान, रुनो घणो थम सतीअ थधीअ में डुके बुखारी, सॼी हयाती सिकी गुज़ारी, सॼी हयाती सिकी गुज़ारी,
जाती थबीअ में डुके बुखारी सॼी हयाती सिकी गुज़ारी सॼी हयाती सिकी गुज़ारी बच्चे बुढ़े खे यकीन थी वियो बच्चे बुढ़े खे यकीन थी वियो अञा बि तोखे गुमानो जानी अञा बि तोखे गुमान रुनो घणो थम लुछो घणो थम सठो घणो थम ज़्यानो जानी सठो घणो थम ज़्यान समुंड मुंहिंजो गवाह थींदो समुंड मुंहिंजो गवाह थींदो ज़मीन ॾींदी बयानो जानी ज़मीन ॾींदी बयान रुनो घणो थम हा साईं वाह उस्ताद बुखारी छा ॻाल्हि कजे साईं आहे है समुंड मुंहिंजो गवाह थींदो ज़मीन ॾींदी बयान जानी रुनो घणो थम लुछो घणो थम सठो घणो थम ज़्यान जानी सॼो कलाम ॾाढो बहितरीनु पर असांजो जेको मोज़िज़ महिमान आहे उनखे रुगो इहा ॻाल्हि आख़िर में सम्झ में आई त ततीअ थधीअ में डुके बुखारी बुखारी त ईअं कयईं छो त बुखारी डेयरी एंड केटल फार्म जो जेको आहे न सो अच्छा, नालो। साईं सम्झो त तव्हां माना इन ते ॻायो था कलाम बुखारीअ ते माना ईअं ओके कयईं समझ में आया ना बुखारी थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया बिल्कुल बहुत अच्छा लगा होगा बहुत अच्छा बहुत ये हमारे सिंध के बहुत ही बड़े शायर नहीं अवामी हमारा शायर, तो उस्ताद बुखारी के कलाम है। तारे अपने सिंध से ही है क्योंकि जो हमारा कंपोस्ट जो ये जाते ही है सिंध में सही 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 अभी आपके जरदारी फार्म पे भी मैंने गाड़ी दी अच्छा अच्छा हाँ डैम में जो उनका है सही सही और माशाल्लाह जितने भी कराची यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर के हैं डॉक्टर अब्बास उनका तो पूरा कल्चर यही डिपार्ट है आप सही लोग का। सही 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 तो उनको भी 3-4 गाड़ियां मैंने दी सही 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 तो जिनको पसंद आ रहा हो सिंध टाइप के लोग जितने हैं सही और है। अंदरूनी सिंध में ही ये ज्यादा है आपको तो पता है ना कि वो लोग इस चीज को काश करते हैं चीजें सही, लगाते सही। हैं अच्छा इस केटल फार्म में कितनी भैंसें हैं आपके पास हमारे पास तकरीबन कोई 2000 भैंसें हैं अच्छा अच्छा और तकरीबन कोई 1200-1500 गाय है अच्छा अच्छा जिसमें हमारी चुआई भी है गब्बिन भी है अच्छा। और बच्चे को हम बड़ा करके रिसाइकल भी करते हैं सही 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 फिर वो आज का भस्सा कल का भैंस बनाते हैं सही सही क्योंकि- अच्छा अंदरूनी सिंध से सिंध के दूसरे जो ज़िला हैं या इलाके हैं उनसे भैंसे लेके भी आते हैं फिर वापसी की बुनियाद पर कुछ नहीं सिलसिला होता है सिंध में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो हमारे भैंसे ले जाते हैं अच्छा उनके फैमिली उनके दे भी बच्चे- जाते हैं मेरे ख्याल से। नहीं दे भी जाते हैं वो परवरिश करते हैं उसकी। परवरिश, अच्छा। उसका जो खर्चा होता है जो होता है उनको हम देते हैं अच्छा, वो अच्छा। बेचारे अपने जमीनों पे लगाते हैं उनकी बेगम उनके बच्चे तमाम लोग लगे रहते हैं जब वो वजन में बढ़ सेहतमंद जाता बना के फिर हाँ, वापस देते हैं, हाँ। फिर हमें वापस करते हैं उनको जो पैसे है वो देते हैं क्योंकि आपको तो पता है सिंध में लोग बड़े शौक से इसकी देखभाल करते हैं सही 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 उनको बड़ा इसकी हर चीज की मालूमात होता है किस वक्त जानवर को पानी पिलाना है किस वक्त चोकर डालना है किस वक्त ग्रीन पाउडर डालना है किस वक्त उसको पाला डालना है सही सही तो बड़ा ख्याल करते हैं और माशाल्लाह सिंध में बहुत अच्छी परवरिश करते हैं सही 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 परवरिश पे अभी शगुफ्ता सभा से बात करते हैं कि बेसहारा औरतों की परवरिश भी एक मुश्किल काम है तो क्या कोई मतलब वहाँ पे कोई स्टाफ वगैरह रखा हुआ है आपका या खुद ही करती हैं सबकी देखभाल आप नहीं माशाल्लाह स्टाफ है पूरा हमारा जो कि ट्रेन है क्योंकि फुल टाइम ओल्ड एज लोगों को केयर की ज़रूरत होती है अच्छा किसी भी वक्त किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है तो स्टाफ होता है मैं खुद भी वहाँ होती हूँ मैं देख रही होती हूँ सबको क्योंकि ओल्ड एज लोगों के साथ तो मसले मसाइल ज़्यादा ही होते हैं सही 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 तो उनके लिए तो स्टाफ की बहुत ज़्यादा नीड है 24 आवर्स स्टाफ हमारा सही, सही। मौजूद होता है वहाँ पे वो स्टाफ मतलब वो फ्रीलांस काम कर रहा है या कोई सैलरी पे नहीं, किसी का जज्बा भी हो सकता है ना भाई नेकी का काम है मैं खुद ही आ जाता हूँ खिदमत के लिए असल में देखिए इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि कन्वेंस चार्जेस ही मार देते हैं इंसान को तो आज से हमें तकरीबन 6, 7, 8 साल पहले तो वॉलंटियर बहुत आसानी से मिल जाते थे जो कि आते थे और आके काम में हमारी हेल्प करते थे लेकिन अब चूँकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है हर एक की अपनी फैमिली है तो अगर वो वॉलंटियर टाइम मिलता है तो कभी हफ्ते में 1 आवर 2 आवर कर देते हैं लेकिन अच्छा। रेगुलर बेसिस पे तो वॉलंटियर अब नामुमकिन है सही 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 सैलरी बेसिस पे है तमाम सही, स्टाफ सही। हमारा तो ये सहारा कौन दे रहा है बेसहारों को अल्लाह तो दे रहा है आप भी उसमें हेल्प कर रही हैं लेकिन लोग
مطلب مخیر حضرات ہیں کون ہیں وہ؟ جی اللہ بالکل ظاہر سی بات ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اللہ ہی ایسے کاموں کو چلانے والا ہے. صحیح. لیکن اللہ بھی اپنے نیک بندوں سے ہی ایسا کام لیتا ہے. اللہ پاک کے ایسے سلیکٹڈ بندوں سے لیتا ہے. سلیکٹڈ بندے ہیں جو کہ اللہ نے چوز کیے ہوئے ہیں اس کام کے لیے، تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. تبھی ایک طویل مدت سے اس کام کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن ابھی مزید ہمیں اچھے اور نیک دل لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ جگہ ہماری رینٹ کی ہے اور تقریباً 20 سال ہونے والے ہیں. 18 سے 20 سال. کہاں پر واقع ہے یہ بھی بتا دیں. جی نارتھ ناز آباد ایف بلاک میں. اچھا اچھا صحیح صحیح. تقریباً 20 سالوں سے ہم رینٹ کی جگہوں پہ تبدیل کرتے رہتے ہیں. ہر 4-6 سال بعد ظاہر سی بات ہے جگہ ہمیں تبدیل کرنی پڑتی ہے. اچھا 20 سال میں کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا کہ کسی خاتون کسی عورت کا کوئی رشتہ دار یا بیٹا پچھتاؤ میں آ گیا اور آ کے واپس لینے آیا انہیں اپنی ماں کو؟ کوئی ایسی کوئی ہوئی ایکٹیویٹی؟ محبت جاگتی؟ نہیں، ان کی محبت نہیں جاگتی ایکچولی. جن فیملیز والی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے ہم نے تھوڑا سا کرائٹیریا دوسرا بنایا ہوا ہے. اچھا یہ کون سا کرائٹیریا؟ یہ بریک کے بعد آپ سے پوچھ رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. ننڈی سائی وٹھوں تھا ونجو کے نام نہ سکر رہے جو ڈسندا رہے جو پانچ جو پروگرام سلام سندھ. مجھے سندھ کے سلام سلام سن، مجھے سندھ کے سلام سلام سن، مجھے سندھ کے سلام سلام سن، مجھے سندھ کے سلام سلام سن. سلام سندھ میں ایک بار وری تاں کے بلیکار چوں تھا گفتگو جتنا چھڈی ہوئی سی اتاں ہی کنٹینیو کیوں تھا. آگوش اولڈ لیڈی ہوم جی جیکا سربراہ ہے یہ شگفتہ سبھا उहा असां सां गॾु आहे. नुसरत हबीब साहब गॾु आहे बुखारी डेयरी एंड केटल फार्म्स जो. सो शगुफ्ता जी बात जहाँ छोड़ी थी वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं क्राइटेरिया के हवाले से मत बता रही थी. हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसी माएँ जो अपना घर रखती हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो घर से बढ़कर तो कोई जगह हो ही नहीं सकती. हम कितना भी ख्याल रखें, कितनी भी उन्हें खुशियाँ फराहम करें, कितनी भी मोहब्बत दें, लेकिन घर घर होता है, बच्चे बच्चे होते हैं. सही. हमारी कोशिश ये होती है कि हम दोनों साइड से ब्रीफिंग करें और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बेशुमार माएँ हम घरों में आबाद कर चुके हैं. अच्छा, जो कि निकाल दी गई थी घरों से और घरों में जो है वो रोड से हम उन्हें लेकर आए थे और वो रोड पे बैठी हुई रो रही थी और अहले महल्ला ने हमें फ़ोन करके कहा कि फला पुल के नीचे बैठी हुई है, माँ सर्दी से डर रही है और आप लोग उसको ले जाएं. और हमने फिर दोनों साइडों से ब्रीफिंग दी और फिर थोड़ा सा हम आप लोगों के हवाले से एक डर भी देते हैं उनको कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो हम मीडिया पे आपको लेके आ जाएंगे. अच्छा अच्छा अच्छा. तो ये खौफ बड़ा खौफनाक होता है. सही सही. तो उनके पेरेंट्स को बताते हैं. जी फिर जो है वो अपनी माँ की इज्जत भी करने लगते हैं और हम अहादीस की रोशनी में भी उनको समझाते हैं. मैसेजेस उनको व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं रोज़ाना. सुबह एक मैसेज फजर की नमाज के बाद अल्लाह की रज़ा के लिए आप ये करें ये करें. इस तरह जो है अहादीस की रोशनी में देखिए कतरा कतरा जब गिरता है तो किसी को आप एकदम से समझाएंगे कि ये आपने अपनी माँ को क्यों निकाला, ऐसा क्यों किया, उसकी समझ में बात नहीं आएगी. लेकिन जब कतरा कतरा रोज़ एक कतरा उनके पड़ेगा ना तो वो कभी ना कभी तो 2 महीने 3 महीने बाद उनको अकल समझ आएगी. इधर हम मदर की भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि थोड़ा अपने आप को आप भी थोड़ा सा चेंज करिए. थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है. उनकी भी जाहिर सी बात है जब वो घर से दूर होती हैं तो उन्हें एहसास होता है. आप इग्नोर करें, किसी से बात ही ना करें, मतलब अपना नहीं ये नहीं समझाते. नहीं, आपकी एक रिस्पेक्ट है, आप मदर हैं, आप घर की मालिक हैं, जाहिर सी बात है आपका. लेकिन ये कि कोशिश करें कि फजूल जो बातें हैं, छोटी मोटी बातों को दरगुजर करना अल्लाह को पसंद है. बातें तो अपनी जगह ठीक होंगी लेकिन बच्चों को फजूल लगती है वो बात ना करें. जी जी जी. कॉलर ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. साईं केर पिया ॻाल्हायो? साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो? मज़े में? बिल्कुलु ज़बरदस्त. छा चवणु चाहींदव प्रोग्राम जे हवाले सां? वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी. छा कुझु ॿुधाइणु चाहींदव, को सवाल करणु चाहींदव? वाह वाह साईं, वाह वाह. कजो गानो ॿुधायो साईं. असां ॿुधायूं? ठीकु आहे ठीकु आहे. तव्हां फरमाइशी प्रोग्राम त न आहे पर कोशिशि कयूं था तव्हांखे ॿुधायूं था को कलाम सुठो. असां वटि तनवीर अली साहिबु आहे, थोरी देरि में तव्हांखे सुठो कलाम ॿुधाईंदो, तव्हांजी दिलि ख़ुशि थी वेंदी. जी तो हम बात कर रहे थे शगुफ्ता जी, उस बात को कंटिन्यू करते हैं. जी बिल्कुल. तो हमारी कोशिश यही होती है
کہ ہم ان کو ان کے گھروں میں سیٹ کر دیں ان کو، پھر اس کے بعد ہم ان کو کانٹیکٹ بھی کر کے پوچھتے رہتے ہیں، ان کی گاہے بگاہے خیریت بھی لیتے ہیں، جا کے وزٹ بھی کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں اچھی ہی رپورٹ ملتی ہے کہ اب ماشاء اللہ بڑی دعائیں آپ جو ہے نا وہ روزانہ کماتی ہوں گی، دعائیں جیتنے کا بہت اچھا موقع ہے. بہت زبردست کام ہے یہ. اچھا نصرت صاحب، قربانی پہ بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو بریک بھی لے لیا تھا ہم نے. قربانی کے حوالے سے کیا؟ قربانی کے حوالے سے ہمارے پاس جو جانور ہیں کچھ ہم اس وقت فارم سے سیل کر رہے ہیں، بخاری ڈیری جو ہماری پپری میں. اچھا اچھا. اور 15 تاریخ سیل ہو رہے ہیں یا وہاں پر کچھ سیل ہو رہا ہے؟ مویشی منڈی لگی ہے وہاں پر؟ نہیں، وہاں پر انشاءاللہ 15 تاریخ کو لانے کا سوچ رہے ہیں کہ بارش نکل جائے. کچھ وہاں پر ایس او پی فالو ہے، وہ تمام چیز کو پہلے فالو کرنا پڑے گا. یا آپ ایسے کر لیں، آپ 15 سال سے کم عمر کے بچے کو نہ لائیں اور بڑے کو نہ لائیں 50 سال سے. بہرحال اچھی بات ہے، ہر انسان کو اپنی ایس او پی کو فالو کر کے کام کرنا ہے. اگر وہ ایس او پی نہیں کرے گا تو اپنا کام کیسے کرے گا؟ اور جب ایس او پی کی طرف فالو کرتا ہے تو اس کا کام بھی بہتر ہوتا ہے. کیونکہ جو ہمیں ایک پرابلم یا ایک مصیبت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کرے گا. اور ایس او پی کے ذریعے انشاءاللہ 15 کے بعد مویشی منڈی میں بھی لگائیں گے بخاری ڈیری کے بڑے جانور. کچھ ہمارے ایسے ہیں کہ وہ مویشی منڈی میں بکے گا. اور باقی یہ کہ کرونا کے حوالے سے بڑا مسئلے مسائل جو چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بڑا حساب کتاب سے ہمیں جانور بھی لانا ہے اور لگانا بھی ہے. لوگ زیادہ قریب نہیں آئے، زیادہ دیکھے نہیں. صحیح. اچھا، یہ دودھ کی قیمتیں کبھی کبھار دیکھتا ہوں کہ کم ہو جاتی ہیں اچانک سے. 80 روپے کلو اصل میں، پھر 100 روپے دوسرے دن، ایک دن 80 روپے میں لے کے جاتا ہوں، پھر دوسرے دن 100 روپے، تیسرے دن 110 روپے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ اصل میں دودھ جو ہوتا ہے یہ منڈی پہ لی مارکیٹ میں ایک منڈی ہے، وہاں اس کے ریٹ کھلتے ہیں. اچھا. کہ اب وہاں پر جب ریٹ کھل جاتا ہے کوئی 6000 کوئی 5000 روپے من، تو دکاندار بیچارہ 110 روپے میں بیچ کے 4500 میں پورا نہیں کر پاتا ہے. بہت سے دکاندار یوں کرتے ہیں کہ شام کو جلدی شاپ بند کر دیتے ہیں کہ دودھ ختم ہو گیا. اور جب گرمی ختم ہوتی ہے، جب سردی آتی ہے تو منڈی ریٹ کم ہو جاتے ہیں. 3000 3200 1800 روپے من. اس وقت دکاندار کہتا ہے 1 لیٹر کے پیچھے آدھا لیٹر فری لے لیں، یا ایک پاؤ فری لے لیں، یا 100 کی جگہ 80 روپے لے لیں. یہ جو مکسچر چلتا ہے نا، بینر لگے ہوتے ہیں، بینر لگے ہوتے ہیں، کوئی لیٹر لگا دیتے ہیں. مگر حکومت کی طرف سے جو آرڈر ہے کہ اس کو آپ 94 روپے بیچیں. اچھا. اب اتنی مہنگائی کے اندر میں لوگ کس طرح 94 میں سروائیو کریں گے؟ اس وقت چوکر مہنگا ہے، مکئی مہنگا ہے، کھلی مہنگا ہے. جو بھی چارہ، جو بھی وانڈا ہم ملاتے ہیں جانور کو کھلانے کے لیے، وہ تمام چیزیں اس وقت اتنا مہنگا ہے کہ ہم دودھ سستا کر نہیں سکتے. ہوم ڈیلیوری سروس کرتے ہیں ہم گھروں میں 120 روپے میں پوچھ پیکنگ. اچھا. جو کہ بخاری ڈیری کے نام سے پوچھ پیکنگ ہوتا ہے. اچھا. ہم گھروں میں جا کے پہنچاتے ہیں 120 روپے. گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ریٹ کم کرو. صحیح. مگر ریٹ کم کرنا اس وقت بہت مشکل ہے کہ مہنگائی کے حساب سے. ویسے دودھ خالص ہوتا ہے دکانوں میں؟ پیور نہیں، کھلا پیور ہوتا ہے. سنتے ہیں کہ ملائی ولائی نکال کے دودھ. نہیں، ملائی نہیں نکالتے ہیں، اس کی کریم اور فیڈ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جو کریم نکال لی جاتی ہے. نہیں، ٹیٹرا پیک والے جو ہوتے ہیں جو الگ بنا رہے ہیں وہ شاید ٹیٹرا پیک کریم کے بغیر دیتے ہیں. بہت سے لوگ فیڈ استعمال کرنا نہیں چاہتے ہیں. اچھا. اب کھلا دودھ میں تو بالکل ریزنیبل ہوتا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا. وہ تو جیسے چوائی سے آتا ہے وہ اپنی ٹھنڈا کرتے ہیں اور تھیلی میں بیچنا شروع کرتے ہیں. اچھا. ٹیٹرا پیک کے اندر فیڈ الگ کر دو یا وہ الگ کر دو، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. ٹھنڈا کرنے کی اگر وہ مشین نہیں ہے، وہ مشینیں ہمارے پاس اپنا جس کے اندر دودھ ٹھنڈا ہوتا ہے 30 من کی 20 من کی، اس میں سے پھر ٹب پہ نکال کے صحیح لوگوں کو دیتے ہیں. اس میں برف تو نہیں ڈلتی نا؟ نہیں، برف وہ تو ڈائریکٹ چلڈ چلتا ہے. اس کے آؤٹر لگے ہوئے تھے جس طرح کے اے سی چلتے ہیں، اس میں وہ ٹھنڈا کرتا ہے. صحیح. تو ماشاءاللہ سے زبردست جی آپ نے بتایا. تو یہ خیال کیسے آیا شگفتہ جی آپ کو؟ کیونکہ یہ خیال کم ہی لوگوں کو آتا ہے کہ اتنا اچھا کام کوئی کیا جائے. یہ خود کا جذبہ تھا، بابا نے بتایا تھا، امی کی فرمائش تھی، یا کسی کو ٹریبیوٹ دینا تھا کہ بھائی میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں؟ دیکھیں، جب اللہ پاک نے کوئی کام آپ سے لینا ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک آپ کی سوچ کے دھارے بھی اس طرف ہی موڑ دیتے ہیں. اچھا. اور آپ کے قدم بھی اس راستے پہ ڈال دیتے ہیں جو کام آپ کو اللہ پاک نے آپ سے لینا ہوتا ہے. یا کسی معصوم کسی عورت کو روتے ہوئے دیکھا کہ آپ کو خیال آ گیا؟ وہ تو بے شمار ایسی خواتین جو کہ میرے پاس آتی تھیں، کیونکہ میں کافی ٹائم سے سوشل ورک کر رہی ہوں، اور ایسی خواتین صرف ان کو شیلٹر ہی نہیں فراہم کرتی، میں ایسی خواتین جو کہ
घर में मौजूद होती हैं और उनको स्किल्स फराहम करते हैं हम, वो कुछ काम करना चाहती हैं और उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती, ज़राए नहीं होते कि वो कुछ कर सकें, उनको गाइडलाइन देना, उनको ट्रेनिंग करवाना, अगर वो ट्रेनिंग उनकी स्टिचिंग कर सकती हैं तो उनको मशीनें फराहम करना, ये भी हमारा इदारा करता है। अच्छा, ओल्ड होम में ये बंदोबस्त है पूरा? ओल्ड होम में नहीं, उनको घर में बैठ के हम प्रोवाइड करते हैं। जो लोग अपने घर में रहते हैं लेकिन वो अर्निंग के रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, खवातीन काम करना चाहती हैं, खवातीन को बाइख्तियार बनाने का काम भी हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि डिसेबल हैं, जो कि माजूर हैं, उन लोगों के लिए भी हमारा इदारा जो है उनको सपोर्ट करता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कहीं और से करवाई जाती है और उसके चार्जेस हमारा इदारा पे करता है। या अगर जब उन्होंने ट्रेनिंग कर ली, जैसे कि स्टिचिंग की उनको हो गई ट्रेनिंग, उनको मशीनें फराहम की जाती है, उनको हम अगर ब्यूटिशियन डेफ एंड डैम बच्चियाँ हैं, वो ब्यूटिशियन का कोर्स बहुत अच्छा कर लेती हैं, हम उनको पार्लर में जॉब दिलवाते हैं आगोश की बिहाफ पे। अच्छा। और ऐसे लोग जो कि माजूर हैं, माजूरी का शिकार हैं और वो कुछ बैठ के काम कर सकते हैं तो हम उनको रोज़गार फराहम करते हैं, जैसे कि बर्गर का स्टॉल उनको लगवा दिया, फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल लगवा दिया, सब्जी का ठेला लगवा दिया, फ्रूट का ठेला लगवा दिया। मतलब हमारी जो कोशिश है वो ये है कि माशरे से जो डिसेबल लोग हैं बोझ ना बने, वो पाकिस्तान के लिए बायसे फख्र बने। सही। अच्छा, जो ओल्ड होम में जो ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, तो उनकी इंटरटेन के लिए कुछ कोई बंदोबस्त है, कोई तफरीह के लिए, कभी पिकनिक पे लेके जाती हैं उनको, या बिल्कुल ये सिर्फ घर में ही मौजूद है? नहीं, ग्रैंड पिकनिक जो होती है वो ये बड़ी मज़ेदार पिकनिक होती है, बहुत मज़ेदार, ओल्ड एज के सारे लोग साथ में हों। हमें जो है हट हम लोग वहाँ पर लेते हैं और वहीं पर ही हम लोग इन लोगों को अर्ली मॉर्निंग लेके जाते हैं। बड़ी मजेदार बातें करते होंगे ये, मतलब पिकनिक पे इनके साथ जाना चाहिए। जाती हैं और उसमें तमाम खवातीन, ऐसी खवातीन जो बैठ भी नहीं सकती, उनको हम गोदों में बिठा के गाड़ी में बिठाते हैं, हमारी मेड उनको सपोर्ट करके बिठाती हैं, क्योंकि उनका भी तो हक है ना एंजॉय करने का। सही। और हम लोग सी साइड ही जाते हैं, हाउस बे वगैरह जाते हैं, पूरे दिन की पिकनिक होती है हमारी, वहीं पे जाके हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ लेके जाते हैं, फिर दोपहर लंच में बारबेक्यू होता है वहाँ पे। सही। बहुत शानदार पिकनिक होती है। कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। साईं केर पिया ॻाल्हायो? आमिर केस कागे वॾो बढ़िया सिंह ॻोठ मारूं काके पुट आऊं कड़वाला आवाजो। साईं ॾिसो पिया प्रोग्राम, छा चवणु चाहींदो भाउ? प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सुठो चले। ये जो मैडम बैठी है, मेरा उसको सलाम, और भाई को जो एजेंसों के बारे में कह रहा है, मैडम से ये पूछना चाहूंगा, ये जो आप FLI वगैरह चलवा रही हैं, इसमें अखराजात की जो चीज होती है वो तो आपको एड मिलती है, अगर कोई आपका अकाउंट मिल जाए फिर हम इसमें जो है नोट करें। मैं बात को समझ नहीं पाया भाई, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। कोई पूछ रहे थे कि सिलाई मशीनें कैसे देती हैं आप, किन बच्चियों को दे रही हैं, तो इस हवाले से कोई इनका सवाल था जी। मैं क्लियर कर दूं, उन बच्चियों को, जो बच्चियां अगर स्टिचिंग का शौक रखती हैं, हम उनको पहले ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा। फिर उनको हम मशीन भी देते हैं, मशीनें भी देते हैं, या ऐसी बच्चियां जो कोर्स करना चाहती हैं, उन्होंने कोर्स किया हुआ नहीं है, हम उनको कोर्स भी करवाते हैं मुख्तलिफ जगहों से। पे हमारा इदारा करता है, खाली स्टिचिंग का ही नहीं, बहुत सारे कोर्स हैं। बाज़ बच्चियां एजुकेटेड होती हैं, यानी उन्होंने इंटर किया हुआ है लेकिन वो मज़ीद उनके पास तालीम हासिल करने के पैसे नहीं है, तो हम उनको भी कंप्यूटर कोर्स भी करवाते हैं, उनको हम इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स भी करवाते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि ऐसी हमारा जो मकसद है वो खवातीन को बाइख्तियार बनाना है, यानी वो भी आजकल महंगाई के ज़माने में अपने घर में फैमिली में सपोर्ट करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि खवातीन बाहर निकलें, घर में बैठकर अर्निंग के रिसोर्सेज करें। हम ऐसे काम उनको, घर में बैठने के काम उनको फराहम करते हैं। सही। अच्छा नुसरत साहब, ये डेयरी और केटल फार्म का जो कारोबार है, इसका क्या स्कोप है? बंदा कारोबार करना चाहे तो कितने पैसे होने चाहिए, क्या सोर्सेस होने चाहिए? देखिए, इसमें ये है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि हम भैंस रखें और चुवाई करें और उसका दूध मार्केट में फरोख्त करें, तो ठीक है। इसमें सबसे पहला काम होता है कि जिसके जानवर होंगे, जो ऑनर होगा, उसको खुद लगना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि आप खुद अगर इसके पीछे लगते हैं कि आप 2,70,000 का एक भैंस खरीद लिया और उसकी 2 टाइम चुवाई होती है, 10 किलो की रास सुबह 3 बजे तो फिर रात को 3 बजे, उसका एक्सपेंस, उसका खर्चा। सही, इसमें बात करते हैं वक्फे का टाइम। बहुत शुक्रिया। नड़ी साई वठूं था ऐं असां सां तव्हां जुड़ियल रहंदो, असांखे यकीन आहे, पक्का आहे। सो वञो केॾांहुं बि न। सलाम सिंध।
मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन 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 भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध में ऐं ख़ासि तौर ते डेयरी फार्म्स कीअं खोलिया वञनि ऐं छा करणु घुरिजे जेकॾहिं तव्हां खीर जो कारोबार करणु चाहियो था त इन वारे सां पंहिंजी कचहरी थिए पई नुसरत साहिब सां गॾु सो उहा कचहरी उतां ई ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था रहिजी थी वञे ब्रेक विच में अची थो वञे त पोइ उहा ॻाल्हि अधूरी थी वञे कारोबार के हवाले से बता रहे थे आप कारोबार क्या करना चाहिए सबसे पहले तो खुद इन्वॉल्व होना चाहिए हाँ अपने आप खुद इन्वॉल्व होना चाहिए अपने घर के बंदे होना चाहिए और भैंस खरीदना चाहिए फिर भैंस के बच्चे होते हैं गाभिन होते हैं उनके भी बड़ा करना पड़ता है उसके दूध निकलते हैं उसको मार्केट में बेचना पड़ता है उनका खास फीड का ख्याल करना पड़ता है कि वो हम उसे जितने अच्छे तरीके का उसको फीड देंगे जैसे बच्चों को पालना हुआ ये तो बस बिल्कुल बच्चों की फीड का ख्याल अगर आपने उसको किसी के ऊपर छोड़ दिया तो वो तो फिर जाहिर सी बात है अपने हिसाब से ही चलाना है सही सही कि उसको आया और मासी के हवाले नहीं करना चाहिए उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है कोई पेट की तकलीफ है कभी कोई मसला होता है सर्दी आता है तो हम लोग उसको अचार भी देते हैं घी भी देते हैं सरसों का तेल भी देते हैं अच्छा तो जब तक खुद लुक आफ्टर इसकी होती है तो बहुत बेहतर काम है और इसमें अच्छी चीज़ है कि आपको घर बैठे प्योर दूध अच्छी घी अच्छी दही आप खुद बना रहे हैं और खुद खा रहे हैं सही सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है सही क्योंकि दूध तो बहुत कम बिकता है आजकल बाई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकता है दही भी दे दें सरसों का तेल भी दे दें लोग कहते हैं घी भी दे दें मक्खन भी दे दें तो ये तमाम चीज़ें इससे पनीर भी इसी से बनता है दूध से अच्छा पनीर भी दूध से बनता है बिल्कुल बिल्कुल तो आप जमा लें उसको कर लें और लोग तो आजकल घी दही दूध के इस्तेमाल तो ऐसे ही ज़्यादा हो गया सही कि सेहत के लिए भी फ़ायदा है तो अगर अपनी भैंस अच्छा ये तो भैंसों को कभी कभार दूध की मतलब ज़्यादा फराहमी के लिए या पैदावार के लिए इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं ये क्या होता है नहीं असल में दूध के जो पहले लगते थे पोस्टन वगैरह वो तो खैर अब टोटल बंद है अब कहीं भी नहीं लग रहे हैं असल में कभी कोई प्रॉब्लम हो गई कोई बीमारी हो गई उनको अगर कोई मसला हो गया तो उसके लिए तो उनको दवाई इंजेक्शन शरबत तमाम चीज़ें देना पड़ता है अच्छा मगर दूध के लिए जो है ना वो इंजेक्शन अब नहीं लगता है अच्छा जो पहले लगता था अब टोटल बंद है सही कॉलर ले लेते हैं अस्सलाम वालेकुम साईं केर मुझो भा मुखातिब आहे साईं नारो तालको साईं ज़िलो खैरपुर साईं जी साईं तव्हांजे साईं वेठा सफ़ा वेझायो छा चवणु चाहींदो प्रोग्राम जे हवाले सां साईं इन खीर जे बारे में थोड़ी असांखे मालूमात ॾिजो असांखे हिते भरिसां किलर लॻल आहे किलर ते बनी खीर वारो क्लब लॻल आहे डेयरी जेको चवंदा आहिनि अच्छा डेयरी फार्म सही पोइ खीर तव्हांखे खपे या खीर जे बारे सां का मालूमात खपे खीर जे बारे में मालूमात खपे त माना कीअं खीर ॾे ॿार कीअं खीर ॾे या उनजो कहिड़ो खाधो ॾिजे फीड उनखे कीअं ॾिजे मेंह खे जी ठीक है वही हमारी बात चल रही थी प्रोग्राम ॾिसो साईं तव्हांखे यही ॼाण मिले थी ये भी यही पूछ रहे थे फीडिंग वगैरह कैसी होनी चाहिए खिला रहे हैं दलिया दे रहे हैं गन्ना दे रहे हैं सीजन में सेब के छिलका दे दें अच्छा तरबूज अभी आया हुआ है उसको दे दें उसको कोर में काट के वो खिला दें खुराक इसको फीड अगर अच्छा देंगे भैंसों की टेस्ट भी अलग हो जाता है बिल्कुल सही मौसम के हिसाब से चलते हैं वो भी और अगर आप इनको सिर्फ ग्रीन पाउडर घास दे रहे हैं आइसक्रीम वगैरह भी खिला सकते हैं नहीं आइसक्रीम नहीं बच्चे खिलाते हैं कभी कभार देखता हूँ वो बच्चे शौक से खिला देते हैं आम का छिलका खिला देते हैं बहुत सारे लोग और जो भी फ्रूट आता है वो तो जानवर का हक बनता है आप भी खाएं उसे भी खिलाएं जितना अच्छा खाना खिलाएंगे इनको दूध अच्छा मिलेगा सही और परवरिश उसकी सही करेंगे पानी उसको टाइम पे पिलाएंगे और मीठा पानी पिलाएं कोशिश करें कि खारा पानी ना पिलाएं अच्छा मीठा पानी पिलाएं तो और भी बेहतर इनको दूध मिलेगा सही और जानवर को साफ पानी पिलाना चाहिए बिल्कुल साफ पानी मैं कभी कभार देखता हूँ कि जानवरों के लिए साफ पानी नहीं देते यार जानवर है भाई जानवर कहते हैं उसको छोड़ दो वो चर के पी लेगा तो चर के तो गंदा ही पानी पिएगा अगर आपने कोर बनाया हुआ है अपने
बाड़े के अंदर, तो देखिए वो अच्छा था, सही कोर को सफाई करें, सही उसको चूना करें, उसकी गंदगी दूर करें, फिर उसमें मीठा पानी डालें, फिर उसके ऊपर भैंस छोड़ें, वो पिएगा। सही सही सही। और जितना ख्याल ज्यादा रखेंगे चीजें अच्छी होगी आपकी। सही। अब बहुत से लोग ख्याल करते नहीं है। सही सही। उनके मुंशी करते हैं, उनके ग्वाले करते हैं, सही, तो उसमें तवज्जो बढ़ो। चाहिए। अच्छा शगुफ्ता जी, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, कोई अच्छा मैसेज देना चाहेंगी ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए, बेटों के लिए, पेरेंट्स के लिए? कि अपनी माओं का एहतराम करें। आज है कल नहीं होंगी, हर एक की माने जाना है। जब तक आपके घर में है, समझे जन्नत आपके घर में मौजूद है, आपकी जन्नत आपके घर में मौजूद है। उसकी कदर कीजिए, उससे मोहब्बत कीजिए, उसके जज्बात को समझिए, क्योंकि आज वो ओल्ड एज है तो आज आपकी उसको ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि वो उसमें जिस्म में इतनी ताकत नहीं रही है, सही, कमज़ोर हो गई है, बीमारियों का शिकार है। तो आप उसको तवज्जो दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन ज़रूर टाइम दीजिए। ज़ाहिर है आजकल मसरूफियत है। सही सही सही। और ख़वातीन के हवाले से मैं ये कहूँगी कि कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। हमारी उम्मन ख़वातीन जो है वो घर में बैठ के ये सोचती रहती हैं कि हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने औरत को बहुत ही ज़्यादा ताकत दी है। औरत जो है माँ भी है, बीवी भी है, बहन भी है, और बच्चों की तरबियत भी माँ ही करती है। सही सही। तो माँओं को चाहिए कि अपनी बच्चियों की तरबियत में, ख़ास तौर पे बच्चे दोनों की, लेकिन बच्चियों की तरबियत में ज़्यादा तवज्जो दें और उनको एंड्रॉयड मोबाइल और उनको फजूलियात से हटाकर दीन की तरफ लाएं, इस्लाम की तरफ लाएं, नमाज की पाबंदी करवाएं बच्चों को, कुरान मजीद चाहे एक पेज पढ़ें, लेकिन हर घर में मैं समझती हूँ कुरान की तिलावत होनी चाहिए। सही। तो अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कोई, मैं समझती हूँ उसमें इनकार नहीं है कि हमारे जो आने वाली नस्ल है वो अच्छी नस्ल आएगी। सही। नुसरत साहब कोई शॉर्ट में मैसेज देना चाहेंगे आप भी? बस बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने का, आपने खिदमत का मौका दिया, आपको और आपके टीम को बहुत मेरे तरफ से शुक्रिया। और मेहनत करना चाहिए हर काम में, चाहे वो डेयरी का हो, चाहे वो कंपोस्ट फर्टिलाइजर का हो। मेहनत अगर आप करते हैं तो आपको इंशाल्लाह हर चीज़ का फल मिलता है। सही और ज़रूर मिलता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अदा तनवीर तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख थोरा। तव्हांजो मैसेज त कलाम में हूंदो, उहो ॿुधूं था थोरी देरि में। सो मोहरम साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख थोरा। तव्हां असांजे प्रोग्राम में रोज़ असांजो साथ ॾींदा आहियो। ऐं आख़िर में वरी हिकिड़ी ॻाल्हि कंदो हलां त असांखे फीमेल को होस्ट जी ज़रूरत आहे हिन प्रोग्राम खे ॾाढो सुहिणो बणाइण में। जेकॾहिं कोई साथ ॾियणु चाहे थो, असांजी का भेण अचणु चाहे थी, ऐं का जेकॾहिं असांजी भेण दिलचस्पी रखे थी होस्टिंग में ख़ासि तौर ते, त उहा हिन प्रोग्राम जो हिसो थी सघे थी। उनजे लाइ टेलीफोन नंबर स्क्रीन जेको तव्हांखे नज़र आयो पए, तव्हां नोट बि करे वरितो हूंदो, इन नंबर ते बि तव्हां राब्तो करे सघो था। ॿियो सलाम सिंध जो पेज बि आहे, सो उन ते बि तव्हां राब्तो करे सघो था, असांखे ॿुधाए सघो था ऐं पंहिंजी स्किल्स ॿुधाए करे असांजे हिन प्रोग्राम में तव्हांखे हिकिड़ी खुली ऑफर आहे, तव्हां इहा ऑफर जेको आहे सो विञाइजो न। हिकिड़ो ॾाढो सुठो प्लेटफॉर्म आहे सिंध टीवी जो, तव्हांखे फैमिली माहौल मिलंदो ऐं तव्हांखे अॻिते निकिरण जा तमामु घणा मौक़ा मिलंदा। सो ॻाल्हि खे समराइज़ कंदे अॼु वरी तव्हांखे उहा ई ॻाल्हि कंदोसांव त पंहिंजनि माउनि जो, जीअं शगुफ्ता भेण चयो, त एतिराम कयो। माऊं जेके जिन जे घरनि में आहिनि, उन्हनि जे घरनि में बरकतूं आहिनि ऐं उन्हनि जे घरनि में रहमतूं बि आहिनि। जेकॾहिं तव्हां शहर में रहो था ऐं तव्हांजी अमड़ ॻोठ में आहे त महिरबानी करे अमड़ सां मिलणु वेंदा कयो। इन खां अॻु जो उन सां मिलण लाइ तव्हांखे क़ब्रिस्तान वञिणो पवे। इन ते अॼु को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुचे थो। इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो पंहिंजो, पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बीमारनि जो ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो, जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन्हे असां पारां अलावा ही। जी लतीफ़, जी मिठी ॿोली, हक़ मौजूद। जी साईं। सजण विसाण हुजे हा, रिमझिम पई बरसे हा, सजण विसाण हुजे हा, सजण विसाण हुजे हा। महफ़िल उन सां कजे हा, महफ़िल उन सां कजे हा, महफ़िल उन सां कजे हा। रिमझिम पई बरसे हा, सजण विसाण हुजे हा, सजण विसाण हुजे हा।
बरसण ते बीठा आहिनि चवनि था चओ त बरसूं न त तुंहिंजे महबूब जी ख़ातिर 2 मिंटनि लाइ तरसूं बादल बरसण ते बीठा आहिनि चवनि था चओ त बरसूं न त तुंहिंजे महबूब जी ख़ातिर 2 मिंटनि लाइ तरसूं जे तर तो ॾे अचे हा जे तर तो ॾे अचे हा जे तर तो ॾे अचे हा रिम झिम पई बरसे हा सजण विसाण हुजे हा सजण विसाण हुजे हा जंजीरन साहू जान जिस्म जकड़े हा मां जे भॼा पोयां मोजी कमीज़ खे पकड़े हा जुल्फन जी जंजीरन साहू जान जिस्म जकड़े हा मां जे भॼा पोयां मोजी कमीज़ खे पकड़े हा खिली खिली खिलजे हा खिली खिली खिलजे हा खिली खिली खिलजे हा रिम झिम पई बरसे हा सजण विसाण हुजे हा सजण विसाण हुजे हा छेरियूं चमकन गाज था खड़कन गाजन मींह वसायो गुलन फुलन बि थरन बरन अज पंहिंजो वेस मटायो छेरियूं चमकन गाज था खड़कन गाजन मींह वसायो गुलन फुलन ऐं थरन बरन बि पंहिंजो वेस मटायो हिन मौसम में घुमजे हा हिन मौसम में घुमजे हा हिन मौसम में घुमजे हा रिम झिम पई बरसे हा सजण विसाण हुजे हा सजण विसाण हुजे हा तारियूं टकन महकन सारियूं फिजाऊं जावेद नवाज़ चए केॾियूं भुलन थियूं थधियूं बात सभाऊं ओ पन पन बहकन तारियूं टकन महकन सारियूं फिजाऊं जावेद नवाज़ चए केॾियूं भुलन थियूं थधियूं बात सभाऊं गुल भौरो थी मिलजे हा गुल भौरो थी मिलजे हा गुल भौरो थी मिलजे हा रिम झिम पई बरसे हा सजण विसाण हुजे हा रिम झिम पई बरसे हा सजण विसाण हुजे हा महफिल उन सां कजे हा महफिल उन सां कजे हा महफिल उन सां कजे हा रिम झिम पई बरसे हा सजण विसाण हुजे हा सजण विसाण हुजे रिम झिम पई बरसे हा सजण विसाण हुजे हा सजण विसाण हुजे हा अखेर मां उडरे थो हरी नारी रब खे संभाले निकिरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं
जो घुरे थो खुशहाली